बार यही कहती है। मेरा एक एक्स होता था उसको सबसे ज्यादा लगता था कि ये बहुत फनी है, तो उसको ना अब बहुत फनी लगती थी। अच्छा थैंक यू। तो मैंने बैठ के स्टॉक किया। रियलिटी तो ये है कि मैंने बैठ के स्टॉक किया क्या है भाई? कितनी फनी है। सुंदर लड़के फ्लैट हो रहे थे। लिटरली मैं रिकॉर्डिंग छोड़ के मैं स्टॉक कर रही थी बंदी को। तुमने इस बात में लड़के को छोड़ा है? इस सुंदर के पीछे मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। No, this is gonna be very exclusive, by the way. Nobody knows that when I was 16 years old, I was doing a job at this BPO center. So BPO centers are also known as call centers. देख रहे हैं आप आजकल के सेलिब्रिटीज तो ऐसे करते हैं। ऐसे वो कह रही है, ऐसे दुआते हैं आप। तो मैं दुआएं दे रहा हूँ, मैं दिल से दुआ दे रहा हूँ, मुझे हाथों की जरूरत नहीं है। जिन लोगों के हाथ नहीं होते क्या उनकी दुआएं कबूल नहीं होती? यार ना कर प्लीज। Please don't even बजाओ। I've seen you guys doing that clap. वो शावी की होती है, मेरी नहीं होती। अब मैं नहीं करूँगी। So you know we'll respect. You start. Okay. Go on. ये माइक इसी में। इसको सीधा कर ले। इसको सीधा करके फिर कैसे क्लैप करूँ? नहीं रख ले। रखना यहाँ पे वही तो कह रही हूँ। ये देखो ना, ये रखा मैंने माइक। Hey guys, what's up? Welcome back to another podcast. This is your host Shavi Jaffrey, and with us is the beautiful, the evergreen Miss Momina Sundar Sayyida. बैठे प्लीज। कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आज आप काफी देर की आई हुई हैं हमारे घर। हाँ। लेकिन हमारे गेस्ट ने अभी हमें ज्वाइन किया। यस। हमें जब से आई हूँ मैं तब से खजूरें खा रही हूँ, तो मुझे कुछ पता नहीं है उसके। यार वो खजूरें कितनी मजे की हैं यार वो मैं ना अभी एक खा रही थी, फिर मैंने दूसरी खाई। इससे मैंने ना पीछे से मोमो को आते देख लिया, तो मुझ में ना लालच आ गई, मैंने फौरन दूसरी खा ली। फिर वो ना आयशा ने वीडियो बनानी शुरू की, मैंने तीसरी मुंह के अंदर डाल ली। और बस मैंने यार वो खजूरें, once you have those खजूरें like आयशा बनाती है, बड़ी मजे की, like we'll give it नट्स डाल के न्यूटेला। ओहो they're amazing. But anyways, खजूरों से याद आया, हमारी जो आज की गेस्ट है वो खजूरों की तरह मीठी है। अच्छा तुम क्या इमेजिन करना शुरू हो गई थी? मैं बताती हूँ कि तुम्हारी नेल पॉलिश है। यार तुम यार एक सेकंड यार, तुम मुझे जज ना कर पहले। यार ये आयशा ने लगा दी थी। It's not my mistake. Like I just want everybody to know this is like I didn't put it myself. यार एक वक्त पे एक अगर बंदा बात कर ले तो बेहतर है ना। मेरी बात सुनो एक सेकंड यार, मैं पहले अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करा दूं, बिकॉज आज हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो हमारा गेस्ट है, जो कि ladies and gentlemen, put your hands together for a phenomenon in Pakistan nowadays. Put your hands together for the one and only Aima Bey. एक मिनट, nowadays का क्या मतलब है तुम? Nowadays यानी अब बात करेंगे nowadays पे, ठीक है ना? यार आयमा यानी कि nowadays है। देखो तुम मुझे अंकल कह सकते हो तो। मैं वेट कर रही थी कि ऑनो में अंकल बोलो। सीधे देखें, अब शावीर की शादी हो चुकी है, तो अब तो शावीर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी हो चुके हैं हम सबसे। किस चीज में? मैरिड लाइफ में। अच्छा। भाई तो तभी तो अब अंकल शादी हो चुकी है, अभी हम सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। हाँ, और पता नहीं क्या बात खुलने लगी। और मेरी दोस्त के लिए भी इधर आप जो है काफी एक्सपीरियंस हो चुके हैं, एंड यू हैव दिस अंकल वाइब नाउ। सो पता है मैंने तुमसे उस दिन ये बात कही थी कि तुम्हारी पिक्चर्स बहुत डैड पिक्चर्स आ रही हैं, याद है? मैं तुम्हें फोटो वॉल पे कह रही थी। So once again ladies and gentlemen, this was today's podcast. I hope you guys enjoyed the podcast for the day. तुम लोग का अगर बुली हो गया हो मेरा, तो हम लोग आगे बढ़े बुली तो नहीं कर रहे, वैसे बता रहे थे कि ये ऐसे चल रहा है सिस्टम, कि मैं अंकल हो गया हूँ। यानी जिन लोगों की शादी हो जाती है वो अंकल हो जाते हैं। हो नहीं गए, लेकिन अच्छा एक काम कर, एक सेकंड मैं थोड़ा आयमा सॉरी, हाँ यहाँ पे आवाज नहीं आएगी वहाँ पे। सॉरी, मैंने आज तक माइक नहीं पकड़ा, मुझे पता नहीं है माइक किस तरह पकड़ते हैं, इसलिए ऊपर से पकड़ा मैं ना। मैंने सिंगिंग करते हुए यहीं से पकड़ते हो ना? मैं यहाँ से पकड़ती हूँ। I know, I saw your show the other day. Oh, you did. I did see your show. I'm a pass. Sorry, okay, sorry, मैं भूल गई। आधा बहुत पिछला सारा पॉडकास्ट इस तरह जो आपने इसको अंकल कहा है ना, वो बात हम दोबारा कर सकते हैं। यार नहीं अंकल, इसको दोबारा हम लेके आएंगे। हाँ, तुमने तो मेरा शो देखा है यार? मैंने शो देखा है तुम्हारा। बाय द वे यार, सॉरी पहले इंट्रोडक्शन तुम्हारी हुई है। कैसी हो तुम? ठीक हो? मजे में? जबरदस्त मजे में। अब तो यार अभी जाग गई हूँ, अभी सो के उठी थी थोड़ी देर पहले। बाय द वे आयमा जस्ट वोक अप। आप इसकी आंखें देख के बता सकते हैं। रियली? नहीं यार, मैंने तो बड़ी टिका के क्यूरिन डाली है। नहीं ऐसा लग रहा है कि तुम थोड़ी स्लो हो अभी। आई थिंक वो जो मैं तुमने मुझे कभी देखा है कि लाइक ये बंदी हाइपर एक्टिव हो? हाँ। कहाँ? The twice we met, both time we were hyper active. You're like लोगों में हो गया ना, I'd be faking it. I get it.
हाँ, I do have this alter ego. कि मतलब अगर ज्यादा लोग हो ना तो पहले तो मेरी अंदर ही अंदर like I go like oh shit there's so many people. So You're not an introvert. I am a major introvert by the way. You are. I am a major introvert. You don't like a lot of people. I don't like a lot of people. No, I don't meet a lot of people because it gives me, I'm not going to say anxiety is, sure, it gives me anxiety, yet I feel like, oh my god, entertain karna hoga, baatein karni hongi, okay, and then I'm only comfortable with people जो कि मुझे बचपन से जानते, जो कि मुझे like अगर मैं कहूँ कि यार bro मेरा ये नया गाना है तो आगे से बोले यार we don't care. You know, तो उनके साथ chill करना is different. Because basically what you're saying is like you like original people. Yeah, like people man, just being themselves, not like. अच्छा, I never thought that I'd be saying this one day, by the way, because मुझे बड़ा शौक था, like, oh, I'm gonna be the life of the party, and I used to be. ठीक है, I used to be, but then now I think now that I'm old, I'm 28, guys. So, anyways, you're still an uncle though. What's up, auntie? कैसी हो auntie? साथ ही cover कर दिया कि मैं 28 हूँ, but uncle तो you're still uncle though because you're married, so you're still uncle. It's okay. होने तो तुम अपनी शादी तुम होने तो मैं तुम्हें इतना बड़ा गुलदस्ता भेजूंगा उसके ऊपर लिखा होगा congratulations auntie. Auntie, I'm auntie. I don't I'm mind. auntie. ठीक है, तब तक तुम uncle से भी ज़्यादा आगे जा चुके होगे. देखिए तब तुम बुजुर्ग बन चुके होगे. भाई, I'm a भाई. I'm a भाई. तुम्हें पता है भाई क्या होती है? I'm a पुप्पो. तुम मुझे बुला लेना पुप्पो. इसका ना literally ये बातें बनाते हुए सांस फूल रहा है कि मुझे अंकल कहा जा रहा है. मुझे मैं पास बैठी हूँ ना मुझे आवाज़ आ रही है. भाई, I'm auntie. But ये मेरे से I think you're younger than me, right? No, I'm a little older than you. What do you mean? No, you're lying. Yeah. What do you mean? I am. You're lying. I'm a little older than you. Little क्या होता है? 28.5. कुछ महीने. कुछ महीने like you मतलब मेरे एज के हो. हाँ. तो अंकल ही हो ना फिर तो देखो ना. अगर वो अपने आप को बूढ़ा कह सकती है, बड़ा कह सकती है. My mom tells me age is just a number, so just. You got all serious and like. Just a number, guys. कमर में दर्द है और घोटों में दर्द. You know, by the way, this is like a really sensitive thing. I'm actually surprised कि तुम age की बड़ी openly बात कर रही हो कि. I don't care. I want to look old, man. People usually consider me like I don't know, not more than 21 or 22, yeah. Which is now getting annoying because I want to look old. Do you? I do now. Like I feel like because I think हमारी जो majority of the. देखा नहीं मैं कितना like. No, you act young, by the way. You act नहीं, I am you young. Dress young, you act young, you act immature. Yes, thank you thank you so much. ये तीसरी दफा इनविटेशन पे आई है, by the way. मैं ये सबको बता दूं, ठीक है? 2 दफा इसने हमें ठेंगा कराया है, ये तीसरी दफा आई है. और इसकी एक्सक्यूज सुने, वो मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं. ओए ब्रो, लिसन, मैं अभी अपना यार ये इतनी बड़ी कार्टून है. देखो मैं ना तुम्हें जानता हूँ बहुत ऐसे, मैं तुम्हें 3 साल से जानता हूँ. मेरी बात सुनो, सही है? We met with Momina. पहली दफा? नहीं. No. Do you remember we met at the birthday party where it was you took me to a birthday party. Actually, I don't know why I invited you to that birthday party. She took me to a birthday party. I don't know 10 million other people जिनको मैं भी नहीं जानती थी. I only knew like few people, ठीक है ना? उसमें से 2 लोग शायद जिसकी बर्थडे थी ना, शायद उसको मैं barely जानती थी. Then we were talking those days and I was like, yo, your content is really cool. Did I said that? Yeah. I'm just making this shit up. You loved my content. That's definitely a lie. So नहीं I do actually. But मैंने I think हम लोगों की बात चली तो मैंने कहा bro come over, like there's this thing whatever. And then he showed up and he was all surprised. He's like, where am I stepping? Is this a barat or something? Bro, listen, you know what happened? Like I'm an introvert myself. Like I'm a mixture of an introvert and an extrovert. जब बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं ना जिनको मैं नहीं जानता, I become an introvert. But the other way around, I'm an extrovert. अगर मैं सबको जानता हूँ और बहुत ज़्यादा लोगों को, I'm an extrovert. I'll be the loudest. हुआ ये कि I didn't know कि वो birthday party सके. देखो मैं तो birthday parties जिस तरह की होती हैं, हम तो जाते हैं कि केक काट के happy birthday to you वापस आ जाते हैं, right? मैं इस birthday party में गया हूँ. This was one of the nicest birthday parties. It was one of the nicest houses that I've ever seen. पाकिस्तान के AAA grade के सारे celebrities वहाँ पे आए हुए. मैं कह रहा हूँ ये मैंने एक्ट कैसे करना है? ये तो फिल्मों में जाता है. And I never gave him a heads up. By the way, मेरे लिए it was such a big deal क्योंकि मैं उस वक्त पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं आने आया था. Yeah, but people loved you, na. That's why I invited you over there. Thank you so much. People loved you, na. People loved you, na. Come on, na. What are you doing? That's why I invited you there. Yeah. Now you get it? Why? Yeah, of course. Yeah, exactly. I get it. So that's why मैंने किस बात की उठ गए? उसमें ज़्यादा है. मेरे से ज़्यादा
इससे ज्यादा आगे ना एकदम यहाँ करते करते वो गर्दन नीचे टॉर्टोइज की तरह चली गई। They loved you. I remember loved you, ठीक है ना? Not love you. मैं तो निकल आया था वहां से, तुम लोग तो वहीं पे थे। यार वो प्रॉब्लम ये है कि वहां पे एक दफा घुस जाओ तो आपको जाने नहीं देते। तो मुझे आइडिया हो गया था। Very luxurious, subtle, in a very subtle way, it's a jail. निकल नहीं क्या हो गया इतना कि तुम लोगों ने एक्सप्रेशन दे दिया? ये नहीं तो मतलब मुझे ये I had fun, ठीक है? Aima was in a jail cell. You were there too. For 24 hours. मैं खाली 8 घंटे के लिए गया था, ये 24 घंटे के लिए गया। 8 घंटे गुजार दी तुमने तो यार। I have to give it to you man. 5 मैं वहाँ उससे मिल गया था। किस? यार ये बहुत खराब है, पता मेरी शादी हो गई है। किससे मिले थे आप? नहीं यार लड़का था। तुम यार बात सुनो ना, वलीद सिद्दीकी से। I met him over there for the first time. He was such a nice guy. Why are you faking it so much? He's such a nice guy, you know. He is such a nice guy. He is a nice guy, but तुमने बहुत फेक तरीके से बोला। यार ये किस तरह की बातों पे यकीन? तुम्हारे बात का बिल्कुल यकीन नहीं है। मुझे लग रहा है किसी एजेंडे पे आई है आज की पॉइंट। आती इसने मेरा कॉन्फिडेंस चैटर किया, मैंने मुझे अंकल बोल दिया, ठीक है? नींद से उठाया। This is what you're gonna get. नहीं उठाया नहीं, actually I was actually panicking, not panicking, I wouldn't say panic. कितना मैं important नहीं, okay fine. मैं कहूँ क्या मुझे इशारे कर रहा है? कि कौन से इशारे चल रहे थे? Why can't you just say like raise it? ऐसे नहीं करे bro, माइक ऊपर कर लो। नहीं तुम क्या माइक ऊपर करो, तुम कर रहे हो डुम। Okay, I thought this was an honest hour यार, क्या हो गया? बहुत honest हो गए आज हम। तो मैं लाल हो रहा हूँ। क्या बोल रहे, मैं भूल गई। तुम दोनों आज लाल हो रहे हो, क्या बात है? हम लोग ब्लश कर रहे हैं ना आज। Aima Big Big show Do you में both have a है। crush on me or something deep down or no? Do you have a crush on Aima Big deep down? हाँ, Yes, you I have do. to say yes. Yes. Of course. बहुत ज्यादा। उससे मैंने बना लिया था already. I think आधे पाकिस्तान को भी है। तुम्हें आधे मिलता क्यों, नहीं? पूरा क्यों नहीं है? बस निकल आई ना नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी बाहर, बंदा तारीफ करे, थोड़ी सी उंगली पकड़ाई, हाथ पकड़ लिया। क्या किया दोबारा उसने कमबैक देना ना, जवाब देना। अच्छा नहीं ना, पार्टी पे आओ ना, पार्टी पे आओ। So that is where we met for the first time. और आइमा मुझे एक ऐसी बर्थडे पार्टी मिली है, देखो ब्रो, मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा था, लेकिन I was नहीं यार, she keeping an eye was on actually really helpful. She had like that motherly instinct even then. I actually do have that. So many She was people like यार शाबीर तुम ठीक हो ना, हर 3 मिनट बाद आके मेरे से पूछती थी। फिर मुझे पता नहीं मैं खुद ठीक थी कि नहीं। हाँ पता नहीं तुम किस हाल में थी वहां पे। हम लोग हर 3 मिनट बाद आके पूछती थी कि शाबीर तुम ठीक हो। फिर मुझे वहां पे वलीद मिल गया, वलीद और मैं बिल्कुल वहां पे बिल्कुल पहली दफा इसी तरह। वलीद भी मेरी तरह ही था बेचारा, फुल क्लूलेस। उसको भी मैंने ही बुलाया था भाई। वाकई? नहीं आई थी, नहीं वो किसी के साथ आया था। अच्छा तो वहां पे बस मेरा उसके साथ टाइम गुजरा। उसके बाद आई वाज लाइक थोड़ी देर बाद। But you had fun there or no? Of course I had fun यार। You did? Of course, लेकिन मुझे ना बहुत ज्यादा। You were the youngest there, I think. I think I felt out of place. Yeah, because you were the youngest also. और तुम्हें आदत नहीं थी कि यार इंटरेक्शन भी नहीं होगा नहीं किसी, I don't think so. मैं किसी को जानता नहीं था। He was so quick to like gel in with everybody. I was like, okay. I had met a couple of people before. You don't need me. I HSY probably need I had you. HSY I had met before, but apart from him and maybe like 1-2 other people, I had no idea of anybody. लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ना, I had fun. It was like a nice introduction. Okay. कि यार ये Lollywood है. You know, ये पूरा Lollywood था वहाँ का एरिया जमा हुआ था। I remember that. Yeah, it was barely. fun. And the second time we met was at my father's place. Yes. वहाँ पे आपकी एक और फ्रेंड भी आई हुई थी। मेरे 3 और फ्रेंड आए हुए थे। अच्छा चलो करा। मैं तो तुझे प्रोटेक्ट कर रहा था। You were making fun of me that night. Really, was I? You weren't. You kind of were. What did I say? But you know what? We cannot. हाँ, मैंने सोच के आई थी कि Aima, you're not gonna cuss anywhere, ठीक है ना? हम लोग म्यूट कर देते हैं वो। But वो बाकियों को तो पता लग जाएगा ना कि क्या बोला। पहले मेरे पे कम इल्जामात हैं जो एक और लग जाए। Anyways, हाँ, तो 3 मेरे और दोस्त भी आए हुए थे। Momina was there? नहीं, तुम्हें कौन सी ऐसी यार मुझे पता नहीं क्यों मुझे याद पड़ता है। या हानिया आमिर was there? मैं बड़ी अच्छे से याद है। जिन्होंने नहीं, मुझे किसी एक ने बताया था कि तुम बहुत ज्यादा तुम किसी के साथ कहीं पता नहीं लंदन में थे, तुम लोग कहाँ थे जब तुमने किसी को बताया था कि मैं इस कमरे में हूँ, और उसके बाद तुम वहाँ पे थी नहीं और तुम लंदन में ही नहीं थी। पता नहीं इस तरह की कोई स्टोरी थी। पहली दफा मैंने सुनी। नहीं सीरियसली, दे वर टेलिंग मी कि यार आइमा की कभी भी
कहानियों पे नहीं जाना. Like आयमा अगर कहती है ना कि चलो मेरे साथ लंदन चलो, तो पता लगे तुम लंदन के टिकट लेके बैठे हो और ये होगी भी नहीं. इसका प्लान होगा कहीं सरगोदा में कुछ. Actually that's actually kind of true. अच्छा इसमें थोड़ी सच्चाई जरूर है, पर वो मेरा कसूर नहीं है. See मैंने अपनी 2 बेस्ट फ्रेंड्स की शादी जो है वो इसी तरह मिस कराई है, क्योंकि मैंने उनको हाँ बोल दिया, बट मैंने कभी अपना स्केड्यूल सही तरह खोल के नहीं देखा कि अच्छा किस किस दिन क्या क्या हो रहा है. और कोमल, shout out to कोमल, my manager, ठीक है ना, जो कि मुझे हर वक्त बिजी रखती है. You met her, right? I met her, yeah. So जो कि मुझे हर वक्त बिजी रखती है, तो मेरी सारी डेट्स बुक होती हैं. और वो सही कह रहे हैं जिन्होंने भी आपको बोला है कि वो फिल्म करा देती है अक्सर. देखो ये मेरे पे इल्जाम लगा हुआ है. बेटा इल्जाम वो होता है जो ठीक ना हो. ये आयमा ये पता है, और भी बहुत सारे लोगों में ये चीज है. देखा सी लोग भूल जाते हैं. मैं अपनी पार्टनर, तुम्हारी बात थोड़ी कर रही हूँ, मैं वैसे कह रही हूँ कि लोग बिजी होते हैं, उनको नहीं पता चलता, उनको याद नहीं. बड़े लोग बिजी लोग यार, ऐसा थोड़ी. मैंने इशारा देख लिया था तुम्हारा. नहीं मैं तो गर्दन ऐसे वेलकम वाली गर्दन सेट की थी. मैं बहुत ज्यादा पंक्चुअल इंसान हूँ. अगर तुम पंक्चुअलिटी की बात करो, पहले आया हुआ था. पंक्चुअलिटी की बात ही नहीं हो रही. मैं पंक्चुअल नहीं हूँ ना, इसलिए हम पंक्चुअल की बात नहीं कर रहे. हम पंक्चुअल होने की बात नहीं कर रहे, हम कमिटमेंट की बात कर रहे हैं. शावीर 3 जगह. शावीर यू गॉट कमिटमेंट इश्यूज. पहली बात, ये तुम्हारे मुंह से तो बात अच्छी लगती ही नहीं है ना, यानी कि if we're ever going to talk about commitment, about this song Central C का गाना है, ठीक है ना, मैं तो उस गाने की बात कर रही थी. If we're ever going to talk about commitment, I don't want that conversation to start from you. Anybody else can bring up that conversation. Why not? No, today we're only going to talk about commitment issues. Actually not, but again, yeah, sure. What? मैं time की बात कर रहा था. नहीं, मैं बताता हूँ. The reason why I brought up this commitment thing, we invited Aima Big on the podcast 3 times. लेकिन I understand, obviously you're busy. You're busy. मैंने अभी दोबारा खोला है, you know. हाँ खोलो. तो मैं आज जो पुराना नंबर मुझे दिया हुआ था, उस बंदे ने अब अपनी व्हाट्सएप पिक्चर भी हटा दी. मैंने उसको इतनी कॉल्स की. पहले तो उसने 2 बच्चों के साथ अपनी एक पिक्चर लगाई हुई थी अंकल ने. पहले तो 2 बच्चों के साथ अंकल ने एक पिक्चर लगाई हुई थी व्हाट्सएप पे, जिस नंबर पे मैं आपको कॉल की जा रही थी और मैसेजेस भेजी जा रही थी, वो it was not your number. See, this is not your number, right? Anymore. Yeah, this is my old number. Yeah. So that's not my fault, right? और आपका नया नंबर मेरे पास नहीं था. सोचो उस बंदे को पता हो कि आयमा वेग उसको कॉल्स करी कि मैं आना चाहती हूँ तुम्हारे पास. और मैं बोल रही हूँ अपने घर. मैं अगर प्ले नहीं कर रही कि मैंने बोला क्या क्या ऐसे, ठीक है. जिसने भी सुना, मैं नहीं सुना सकती. अच्छा ऑफ कैमरा सुना दो मुझे. हाँ ऑफ कैमरा सुनाओ. वो ऑफ कैमरा होगा तो सुनाऊंगी, ठीक है. अबे साले कमरा दरवाजा खोल अपने घर का. बाहर खड़ी हुई हूँ. शावीर में शावीर की अपनी पिक्चर है, ठीक है ना. इट्स अ फेक पिक्चर ऑब्वियसली गाइस, जस्ट धोखा मत खाइएगा. ये फेक पिक्चर है, ठीक है. ये फिर मुझे नया वाला नंबर मिला और फिर मैंने इससे कांटेक्ट किया एंड आई वाज लाइक ब्रो मैं तो आने वाली थी. तो पहले तुमने किस नंबर पे किस तरह बुलाया था? मैंने तो इंस्टाग्राम पे बुलाया था. फिर आयमा ने मुझे कॉलिंग करना शुरू कर दी. वो नंबर मेरा था एग्जैक्टली कि मैं मर रही थी. मैंने कहा मैं मर रही हूँ यार, प्लीज मुझे बुलाओ. व्हाट आर यू गाइस डूइंग? तो फिर इसने मुझ पे तरस खाया. इसने कहा 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें अपना नंबर देता हूँ, ठीक है. ये फिर मैंने आयमा को अपना नंबर दिया. तुमने मतलब अपना नंबर ही दे दिया? मैंने नंबर ही दे दिया. देख मैंने कहा यार नंबर आई ट्रस्ट यू. भाई दिल के बहुत बड़े हैं. कंट्रोल. हाँ हम लोग कहा थे मेरे घर पे. नहीं आई कैन इमेजिन कि यार तुम्हारा स्केड्यूल बहुत बिजी होगा. आई अंडरस्टैंड दैट. एंड यू न्यू कि आई थिंक आप उन चंद लोगों में से जिनको पता था कि मैं अभी 2 दिन पहले लंदन से आई हूँ. यस I knew because I was speaking to you when you were in London actually. Yes, exactly. Yes. वहाँ पे क्या था, शो था? Yeah, we actually raised money for cancer patients, बच्चों के लिए. Oh, that's और awesome. the fact कि मुझे वाकई पता था कि उन तक जा रहे हैं was the most satisfying moment for me, क्योंकि बड़ा अजीब सा moment हो गया था because even my mom passed away because of cancer. तो अजीब सा मोमेंट इसलिए हो गया था बिकॉज एवरी पेरेंट वाज कमिंग अप ऑन द स्टेज एंड दे वर शेयरिंग देयर स्टोरीज. सो व्हाइल दे वर शेयरिंग देयर स्टोरीज, सॉरी but they were getting really emotional, like really emotional, and I understand that obviously because मेरी अपनी बर्थडे वाले दिन. Can you imagine that? So like how long ago was this? 6 years ago, man. It's not too long ago actually. Shit. So तो जब लोगों को इस तरह मैंने रोते हुए देखा है and all that, so rather than I think मैं इतना सख्त लौंडा बन चुकी हूँ that if somebody's like crying like this, I would feel I would want to do something for them rather than sharing tears with them, because that's not gonna do anything, you know what I mean. At the end of the day,
fine, you get emotional and everything, but at the end of the day, it's not gonna fix anything. Yeah, to be honest, you're only gonna cry yourself to sleep at night. That's it, every night. So हमने बच्चों के लिए कुछ काफ़ी इकट्ठा किया और फिर मैं कुछ देर वहाँ पे वैसे ही रुक गई because I wanted to just like, you know, go away for a while. Or yeah, that's what I did. How long were you there for? I think I was there for like 3 weeks probably. Homesick नहीं होती तुम? 3 weeks. हाँ, मुझे घर याद आ रहा था बहुत ज़्यादा, लेकिन मेरे घर पे होता ही कौन है? Like अब 2 भाई जो मुँह नहीं लगाते, एक बहन जो मुँह लगाती थी चली गई दुबई, ठीक है, और दूसरी बहन डॉक्टर है, वो तो वैसे ही, और एक बहन तुम्हारी हाँ, जो वैसे ही जो कहती है कि मेरे मुँह लगो ही ना, मैं दीवाना, मेरे मुँह ना लगो, you know? तुम मेरे मुँह ना लगो, that's disgusting. I'm a doctor, okay? Please. Yeah, तो ये सीन है. How many siblings are you guys? Including me, we're 5. अच्छा. So we're 5 too, including me. हाँ, तो so I think मेरी जो सबसे बड़ी बहन, I think नहीं, I know, मेरी सबसे बड़ी बहन है, she's a doctor. And then there's an electrical engineer जो कि मेरा भाई मेरे साथ होता है अब, क्योंकि पहले अब्बा ने उसको इजाज़त नहीं दी थी. उसने कहा नहीं बेटा पहले आप तो पढ़ोगे, like you have to complete your degree and everything. So उसने वो किया and then he started doing music and now he's music professor. Then मैं अपने बहन भाई भूल गई और उसके बाद कोमल आई. उसके बाद कोमल ने कहा कि कोमल ने BBA किया, MBA किया, एंड फिर उसको मैंने कहा कोमल ने कहा अम्मा तू क्या कर रही है? बस ठीक है, मैं भी वही मुझे कर रही हूं, मैं तेरे साथ मुझे रख ले जा रही है. वो लाइक शैडो, या आई एम नॉट गोना लाई. फिर मैंने एंट्री मारी. मैंने कहा अब्बा जी आई एम लाइक वेरी रैशनल, सो आई एम गोना बी सुपर नेचुरल विद यू कि ये कि आप मेरे पे पैसे लगाना चाहते हैं, आप मुझे अकाउंटेंट बनाना चाहते हैं, ज़ाया. I'm telling you already, it's gonna be a waste of your money. Just put me somewhere where I know that I can at least do something. तो उन्होंने कहा चल जा mass communication पढ़ ले, ठीक है, जहाँ मुझे पता था कि I'm not gonna do shit either. But then उधर मैंने film and television join कर लिया, जिसमें मुझे थोड़ी सी script writing आ गई, but उसमें भी मैं बहुत interested नहीं थी. See, I was just looking for a composer for myself. You always knew you were a good singer. No, I had no idea that I'm a good singer, but I just wanted to like put my voice out there. You know what I mean? कि मैं चाहती थी कि मेरे गाने. तुम क्या थी? Were you a bathroom singer? Sugar नहीं गाती थी? So back when I was 6 years old, घर पे कोई नहीं होता था और मैं summers के लिए अपने अम्मा को visit करती थी because अब्बा के साथ हर जगह घूमते रहते थे. So जब भी मैं वहाँ जाती थी तो अम्मा जी ने एबा के गाने लगाए होते थे and she'd be cooking and I'd be like having मैं सोफ़ा पे बैठी होती थी, जो मुझे शॉट नज़र आ रहा होता था उसमें ये था कि अम्मा जो है वो कुछ पका रही हैं और साथ साथ एबा के गाने सुन रही हैं, कभी इसके सुन रही हैं. सो आई यूज्ड टू जस्ट लॉक माई सेल्फ इन अ रूम और आई यूज्ड टू पुट ऑन कैरियोकी. और मैं कैरियोकी पे आई वाज मराया कैरी, ट्रस्ट मी, अपने दिमाग में, ठीक है ना. You do sound like her, by the way. You sound like Ariana Grande. I think I'm really good at imitation. Like I can imitate people really well. I think I feel like, और अकेले में तो बहुत ही अच्छा, जब कोई मुझे कह देना तब मैं कहती हूँ, conscious हो जाती है. Exactly, तब कभी भी नहीं होता, तब तो अपनी आवाज भी नहीं निकलती. So yeah, that's the case. So you were basically like super young where you realized के singing अच्छा, अच्छी हाँ, है. I always wanted to like not do something too educational. हाँ, तुम्हें था कि यार practical होना चाहिए. So nobody knows, this is going to be very exclusive by the way, nobody knows that when I was 16 years old I was studying as well as I was doing a job at this BPO center. So BPO centers are also known as call centers. Oh. So I was working at a call, so like okay, even before that लोगों को मैंने कुछ in the beginning I used to go through my comments, तो सब कहते थे oh what a fake accent and all of that shit. So I'd be like, you know, they're not actually wrong because I was never born and bred or ever like मैं कभी बाहर के मुल्क में पैदा नहीं हुई, ऐसा नहीं हुआ. I was born in Himia Khan, it's like a small village, you know what I mean. So but जहाँ मैं काम करती थी, it was called DGS, it was Digital Global Services, and we had to sell cable phone internet services to Americans.
So yeah, so my story, that's my story by the way. तो मैं 16 साल की थी, मैं साथ साथ पढ़ भी रही थी, and then luckily I would say fortunately कि मेरी जो क्लासेस स्टार्ट होती थी वो लेट थी. तो मेरी क्लासेस आई थिंक 11 बजे स्टार्ट होती थी या 12 बजे स्टार्ट होती थी, और मेरा टाइमिंग जो था जॉब का, क्योंकि हम उनके यहाँ पे सुबह हो रही होती है, हमारे रात हो रही होती है, एंड रात एंड सुबह एंड ऑल दैट काइंड ऑफ सिचुएशन, आई डोंट नो. तो मैं पहले वहाँ से फारिग होती थी, एंड देन फिर मैं कॉलेज के लिए तैयार होती थी, मैं कॉलेज जाती थी. कॉलेज में मुझे, सो आई नेवर हैड एन एक्सेंट इन द बिगिनिंग, बट बिकॉज आई वाज ऑलवेज इनटू वेस्टर्न सिंगिंग and to able to like perform like them, you have to have an accent. Otherwise, you know what, no matter how good your voice is, how good your pronunciation is, as long as you're not sounding like them, you just cannot get that feel. ये मेरा अपना personal experience है, I think. That's what I think. I actually agree with you. You're right. Like imagine करो ना अगर Justin Bieber kind of oh baby 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 yeah, oh, like you know like baby. Adele को imagine कर लो, वो गा रही हो. Hello. Hello. Pick up the phone. Exactly. So you have to catch up. So you have to catch up to an accent. Yeah. So people want to judge me for that. Go ahead. Now you can. You guys can. You know everybody's allowed to do that. Yeah, They've done that. Been there, done that. Wala scene bhi ho chuka. Yeah. But the reality is, so we had to go through the 6 months of course where our professor was a completely LA guy. ठीक है, डॉक्टर वेन उनका नाम था, और वो हमें सिखाते थे, एंड आई फेल्ड. सो हमारी एक मॉक कप कॉल होती थी जिसमें वो आपको यू नो नोबडी नोज क्या अगला बंदा कौन है, बट दे यूज्ड टू बी लाइक ओके नाउ सेल अस केबल फोन यू नो इंटरनेट सर्विसेज, एंड देन आई फेल्ड. सो मुझे 4 महीने और लगाने पड़े, और उस पूरे कोर्स में वो आपको अमेरिका के सारे स्टेट्स और देयर पोस्टल कोड्स और देयर टाउन, मुझसे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझसे मिसिसिपी या मैसेच्यूसेट्स नहीं बोला जाता था. बी लाइक सॉरी, हाँ नहीं मेरे से तो आज तक नहीं बोला जाता. मिसिसिपी तुम्हें पता ना, मिसिसिपी बोलो. Mississippi. Massachusetts. Yeah. गाली नहीं देनी. See, it sounded like that to me in the beginning. I'm not gonna lie. निकल यहाँ से साला. मुझे तो जब उसने मुझे पहली दफा बोला, मैंने कहा उसने मुझे पहली दफा बोला, मैंने कहा Would you call me again? क्या बोला. सो मेरे लिए तो ये था ना, मैं तो बहुत नॉर्मल खानदान से आई हुई हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे ऐसा नहीं है, नहीं होता था. तो जब मैंने जॉब स्टार्ट किया, मैसेच्यूसेट्स नहीं होती मेरे खानदान में. मैं नाचे खानदान से हूँ भाई, खानदान से बिलोंग करती थी, मेरे लिए नया था. ठीक है, अच्छा ठीक है. तो अब मुझे सिखा रहे, उन्होंने मुझे फिर फेल कर दिया 4 महीने बाद. मैंने कहा ब्रो कितनी दफा और फेल होना है, अब तो मेरा अंदर का कॉन्फिडेंस भी बिल्कुल शैटर्ड हो गया. लाइक आई डोंट वांट टू डू इट अगेन. मेरी वन लास्ट मॉक कॉल went actually really good for some reason. I don't know why, but like अच्छी चली गई, and then they were like fine. Which name do you want to go for? I really don't want to reveal the name. Please do. Because it was the worst name ever. Please do. And तुम लोग याद कर सकते हैं. So this is gonna be really inappropriate, but I'm gonna tell you कि मेरे boss ने मुझे आगे से. So it's gonna be like really inappropriate when I'm gonna tell you कि मेरे boss ने मुझे क्या बोला था after listening to this name. After listening to the call? नहीं, my name, my fake name. We used to have fake names. Obviously, I could not. It was Lisa Jackson. Lisa Jackson? Yeah, it was Lisa Jackson. Lisa Jackson? Yeah. It was just a made-up name. How is that inappropriate? I'll tell you. No, actually, you know what? I'll tell you off the camera. कौन है Lisa Jackson? Let me Google Lisa Jackson. Lisa Jackson? Wait, why just? No, but like my boss. इसके पीछे कोई story है. No, my boss literally told me that this name sounds like a person from an adult industry. Oh, no way. No way. No. This I don't नहीं, think. एक second. Hold on. 1 second. Lisa Jackson. Dude, Lisa Jackson is an American author. No, उस टाइम पे नहीं थी ना. Best selling. जो उन्हें समझ आई ना. अच्छा, तुम्हें वो basically क्या होती? कि मैंने ये नाम रखना. माइंड में आ गया, उन्होंने मुझसे पूछा मेरी. उन्होंने कहा इस accent पे एक या इस. नहीं उन्होंने. So when you pass the test and everything. So you're now a sales executive. Right. So you have to have a name. Right. तो हर किसी का अपना नाम, तो उनको अपने वो मिली हुई थी. I was such an idiot. I could have just gone for like
any name, you know, like I know a lot of names. Back then मुझे नहीं पता था इतना, मुझे Demi Lovato को पता, मैं Selena Gomez को पता. I could not say those names. So मैंने कहा Lisa Jackson, okay? Because I think I was watching those days कोई Jackson नाम के cartoons as well. मैं उन दिनों कोई cartoons देखी थी जिसका नाम, जिसमें जैक्सन आता था, ठीक है ना. एक्चुअली वो जेटसन्स था, नॉट जैक्सन्स, ठीक है ना. तो तुम लीसा जैक्सन. हाँ, तो मैंने कहा फाइन, I'll just go with Lisa. Lisa is easy and very generic. तो मैं चली गई and my boss told me कि I think you should rethink about your name, and I was like no, I'm gonna stick with this name. I love Lisa Jackson. What do you mean? Actually, because of this name, just because of this name, I actually got a date by I was asked for a date over a call. And there was this 72-year-old dude. He had no idea. He thought I lived in Ohio, by the way. So, and he offered me, by the way, जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा track की, he offered me this whole date thing. He offered me pineapple pancakes for breakfast. 72-year-old uncle breakfast के लिए इसका क्या मतलब होता है? क्योंकि you have to, okay, it's not like. उन्होंने कहा मेरे पास आके रहो. नहीं उसने ये सारी स्टोरीज ने खुद बनाई कि मेरे पास आके रहो. यार मेरा ब्रेकफास्ट में एक सेकंड ये ब्रेकफास्ट पे ही आओ ना, वहाँ पे मुझे आई नो दिस प्लेस जहाँ पे पाइनएप्पल पैनकेक्स अच्छे मिलते. तुम ये लो तुम्हारा गटर है. मुझे लगा कि वो क्या अंकल अच्छा अपने माइंड में अंकल ने पूरी दिन, अच्छा पूरी रात पूरी दिन गुजार लिया है. मुझे अपनी तरफ से पूरी स्टोरी बिल्ड भी करके दे दी कि पता है वो ना एक 72 years old है, वो इसको बुला रहे थे ना कि यार देखो यार एक सेकंड, एक्चुअली दिस इज लाइक अ Canadian slang thing as well कि अगर आप किसी को डेट पे बुलाते हो ना, तो अगर if somebody tells you कि let's say yo would you like for breakfast, अगर मैं किसी लड़की से आके पूछूं कि you have to spend the entire day with that person. Of course, it insinuates कि आप उसके साथ. सुबह से आगे वाला या सुबह से पहले वाला? यार तू मगरिब से पहले वाला. सही है, तेरे हिस्से में मगरिब से पहले. सेफ है. तू टेंशन ना ले जानी, तू सेफ है. सही है, लेकिन ये ब्रेकफास्ट का उस चीज से तो जो 72-year-old अंकल थे ना, मेरा ख्याल है उनकी इंटेंशंस आप सही तरह समझी नहीं. आपको लगा वो आपको किसी रेस्टोरेंट बुलाना चाह रहे थे. पाइनएप्पल पैनकेक्स अंकल ने खुद बना के देने थे आपके. बना के देने थे शायद. तो वो किसी रेस्टोरेंट जाके क्यों बना के देंगे तुम्हें? बोला नहीं कि I'm gonna make these for you. He just said, oh, we should meet up for breakfast and we're gonna have pineapple pancakes. He was very adamant about pineapple pancakes, which I do not understand. I still to this day मुझे नहीं पता कि why pineapple pancakes. And I never had pineapple pancakes, so I was actually curious. But the guy thought that I was from Ohio. So in order to get their social security, it was, you know what I mean, right? It's not an easy job. And then later on, I became one of their top sellers in Comcast. Comcast का अगर किसी को idea हो, you've lived in Canada. Yeah, but what exactly do you mean by that? Comcast. Canada में तो मैं रहा हूँ, लेकिन क्या मतलब? Comcast is cable phone and internet services जो provide करती है, just like but क्या नाम है उसका? Telespell और एक और भी है ना, Time Warner. Okay. ये US में होगा ये. US में actually it was basically for US. सही है, okay. तो see मैंने बड़ी मेहनत की इस एक्सेंट पे. तो मसला कहाँ आता था कि जब मैं अपने कॉलेज वापस जाती थी, तो स्टार्टिंग में तो उनको मेरा नॉर्मल एक्सेंट ही पता था. So when it started changing, my friend used to look at me like, she okay? Is she fine? Is she okay? Why she sounds like going through something? Yeah. Are you going through something? You want to talk about it? And I was like, no, I'm good. So it was really hard for me to keep a balance between the reality of life, which was my mother language, Urdu, and my normal accent, which I do not have anymore. As much as I tried to pull off, ऐसा लगता है कि या तो ये बना रही है या फिर कुछ और है. But yeah, but सिर्फ 2 साल बाहर रह के मुझे एक्सेंट नहीं आ गया. I'm gonna be honest here. 2 साल मैं बाहर रही, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे ये एक्सेंट मिला. Basically तुम्हारी जो ट्रेनिंग हुई हुई है, like you actually trained in this accent, or you've been trained because you had to find a job, you got a job जिसकी requirement ये थी कि तुमने 4 या 8 महीने का कोर्स लिया 2 दफा, exactly, right, जिसकी वजह से तुमने ये accent develop कर लिया. And I actually understand that. So no, but you need to understand the fact कि मेरी सारी दोस्तें बहुत rich थी, कुछ को निकाल के. ये गलत बात है, उनको देख के क्या कुछ को निकाल कर रही हूँ यार. मैं भी उन लोगों में से नहीं थी. So that's what I'm trying to tell you. That's what I'm trying to tell you over here.
they hate me for a reason, for all the right reasons. ठीक है ना? So they hate me for all the right reasons. Good यार, cute यार, ठीक है? nice. अच्छा, अब ये हमारे हम इसको अपनी गैंग में रख सकते हैं, है ना? बुलीज है सारे. तुम लोग चुप करोगे? हाँ, sorry about that. मेरा इंटरव्यू है, मेरी स्टोरी सुनो, मेरा पॉडकास्ट है, मेरा पॉडकास्ट है. हाँ, anyways, तो मैं भी कोई बहुत उनमें से नहीं थी कि ठीक है कि भाई रोज कोई पॉकेट मनी का सीन नहीं, जितने मांगे मिल गए, वो वाला सीन नहीं था. घर का माहौल ठीक था, ठीक है, सही चल रहा था, नॉर्मल था, जिस तरह एवरेज हर किसी का होता है, नॉर्मल लोगों को होता है, ठीक है, उस तरह चलता था. बट हमें एक पॉकेट मनी मिलती थी और मेरी पॉकेट मनी थी 3,000 rupees only. गुड यार. Is it sad? You guys are so disappointed, but judge me, okay? मैं कह रहा हूँ But now my pocket money, I used to give pocket money to people. यार हमें तो नहीं इतनी मिलती थी. कह रही है I am used to giving pocket money now to people. Good यार. Good यार, माशाल्लाह, ये अच्छी बात है, लेकिन तब भी 3,000 ज्यादा थी, पता है? देना. ये अंकल यार, तुम्हें तो मुझे देना पड़ता है. देना. मैं इधी दूंगा ना. यही रिटर्न करके क्या है, मुझे पहले वो चाहिए, मेरी जरूरत की चीज चाहिए. चल, किसी को फोन आ रहा है, किसी no का बज रहा है. तुम खरीद लेना जो मर्जी, जो दिल चाहे. 500 में जो मर्जी. 500 रुपए में क्या मिलता है? कुछ तो मिल जाएगा. अच्छा. So I was not one of those के, और उस टाइम पे ना शीशा का सीन बहुत ऑन था. तो मैं हूँ पंजाब कॉलेज से पढ़ी हुई. तो मैं शीशे पीती थी. Yes. मैं भी पीता था. मैं अभी भी पीता हूँ अगर कभी मिल जाए. मैं बिल्कुल नहीं पीती अब शीशे, क्योंकि it gives me a headache. उसका जो फ्लेवर है वो मुझे सर में जाके लगता है, and then it शीशे से सर में दर्द तो होता है for the people who don't smoke often. Yeah. मेरे भी होता है. हाँ, क्योंकि when you don't smoke often, सांस ही बंद हो जाता है. lungs में जो जा रहा होता है धुआं. हाँ, फिर मैं नहीं पीती. इसलिए मैं ऐसे करती हूँ, फिर मेरे लंग्स कहते हैं, इसलिए फिर मैं निकालना भी होता है. धुआं निकालना भी होता है. निकाल देती हूँ. हाँ, तो I used to be like a pro शीशा back then, ठीक है ना? I'd be like, oh नहीं नया ये खुला है, यहाँ पे भी जाना है, यहाँ पे भी जाना है, यहाँ पे भी जाना है. But I forgot कि ठीक है, पैसे भी डालने होते हैं, you know, पैसे भी खर्च होते हैं. So जो मेरी सही अच्छी वाली, you know, as in like wealthy दोस्तें थी, वो तो डाल देती थी. But like एक पॉइंट आ गया जिसपे हम लोग कोई 15-20 लड़कियां एक साथ जाना शुरू हो गई, ठीक है? फिर हमें पैसे डालने पड़े ना. सबने कहा कि ओ अब तुम हम each person gonna pay this and this and that and this. अब हर दिन मैं 1,000 रुपए नहीं डाल सकती, क्योंकि ब्रो मेरी पॉकेट मनी तो 3,000 है, ठीक है ना, महीने की. मैं हर दिन का 1,000 नहीं डाल सकती, ठीक है ना? क्यों बंदा अपना नुकसान करे फजूल में. Yeah, so and I was like, मुझे किसी से शेयर भी नहीं करा था. I was like, you know what? I'm an independent girl. Back then मैं ये नहीं सोची थी. Back then I was just embarrassed. इसको मैंने फील करा दिया था. Yeah, back then I'm an independent girl. I'm करती. Back then I was just embarrassed. I was like, you know what? नहीं बताना. I'm so cool. I can't tell anyone. So तब मैंने अपनी अम्मा से बड़ी मुश्किल से इजाज़त मांगी कि मुझे BPO सेंटर पे काम करने दें और मैं do a good job. And then I started doing a good job. एक 17 साल की या 16 साल की लड़की को 70,000 का चेक मिल रहा हो बैक देन, तो उसके लिए अच्छा है कि नहीं है ब्रो? गुड. यू नो, तो मैंने कहा नहीं, ये तो मैंने ही छोड़ी और साथ साथ में पढ़ोगी भी. अब आई बी लाइक, oh let me chip in all the time, you know. I'll be like, let me chip in. So but I'm not ashamed of the fact कि अच्छा ठीक है मैंने ये भी किया. It was a really hard, and I'm not gonna say it was a very tough situation for me to keep a balance between मेरी friend की reality जो मेरी असली reality थी, you know, me being very desi who that I am, and also to like completely like change your entire personality when you, as soon as you enter that office, because you're not supposed to be who you are in real life. It was like, oh, you're Lisa Jackson now, you're a sales executive, you have to sell cable phone internet services to these Americans, and if you're gonna mess up you can be fired right there and then. तो मैं 2 lives जी रही थी in a way. Alter ego थी और एक तुम्हारी real personality. Let's just say it was an alter ego for sure. Yeah. But then it's not my fault. I want you to give me a call and sell me an internet service. Like let's see. I can only say like up to like I've done it so much that I feel like it was very generic. वैसे we used to just say like we just used to say नहीं कौन मुझे ऐसे स्पॉट पे फोन नहीं उठा रहे यार. मुझे ऐसे अच्छा तुमने उठाया, वो कॉल नहीं कर, मैं करी थी ना. टिडिंग उठाना. I only used to say, you know what, I only used to say मैं फोन बनूंगी. मुझे भी कोई रोल दो, मैं बेल बजाऊंगी. तुम we only used to say, okay, this call will be recorded for quality and training purposes. This is Lisa Jackson. How may I help you today?
Hey, what's up? What's up with you? No. You want to We were not eat allowed to pineapple say that. pancakes? Yeah. So like that's why. So like you know. रोल भी अंकल का Yeah. देखा है माँ Already uncle वाली vibes हैं उसके अंदर already. You know, yeah. Uncle वाली vibes already है. So ये हमारा पहली लाइन जो 2-3 लाइन हमें याद करनी होती थी. But जो सबसे मुश्किल काम होता था to get their social security. You know what I mean? क्योंकि that's impossible. Who gives that away? No, nobody. But in order to sign up with like one of the telecommunication companies, You have to obviously go because through you're this. buying it online. Yes. So वो मुश्किल काम था. But And especially when you have to like, you know, this is like ये जो sales वाले लोग होते हैं इनका काम actually बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आप imagine करो मैंने तुम्हें कॉल किया है मैंने इसको कॉल किया ना ये इसने मुझे कॉल किया नहीं वो तो inbound तुम्हें calls आती थी कि कोई मसला हो जाए या inbound कुछ भी होता था outbound would be extremely hard right क्योंकि leads create करना is the hardest हाँ thing exactly right so inbound used to be easy हमें starting में inbound मिलता था कि calls आएं कॉल्स आएंगे और आपने हेल्प करनी है कि So अच्छा you just ये have to बंदे का close ये the deal. मसला हो गया और वो हाँ कुछ एरिया में कुछ बहुत बदतमीज भी होते हैं to be very now I can say openly who cares उनको नहीं पता मैं कौन US के लोगों की बुराई हो रही I mean like उनको who नहीं पता cares but like to be very honest some of the people so एकदम मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने उनको कहा कि I'm gonna put you on a hold on a mute तो दो बेटा और माँ थे आपस में बात कर रहे अब वो मुझे जो गालियाँ देना शुरू हैं अब मेरा दिल तो किया कि मैं 2 मिनट के लिए इनको म्यूट पे से हटाऊं और कुछ बोलूं बट आई कुड नॉट यू नो व्हाट आई मीन बट देन यू नो व्हाट आई डिड मैं कहा ओके लेट्स जस्ट कीप देम ऑन होल्ड इनको बात करने देते हैं कितनी बातें कर लेंगे उन्होंने मुझे दिखा के गालियाँ दी हैं ओह शी इज दैट शी इज दिस शी इज दैट इन द बिगिनिंग पहले तो लोग बहुत ज़्यादा ये समझते थे कि ओह यू समबडी इंडियन टॉकिंग फिर मैंने कहा अच्छा नहीं यार ये वाला टैग तो हटाए ना ठीक है ना लेट्स जस्ट लाइक get a little better and I think my western singing यार जो चीज निकल रही होती है ना उसमें go with the flow किया करो तो मस्त मेरी ऐसी निकल जाती है मैंने इग्नोर कर दिया था ना ठीक है तुम लोगों को यहाँ भी बहुत सारी चीजें इग्नोर करनी पड़ेगी हाँ ठीक है so क्या बता रही थी भूल गई कि उन्होंने गालियाँ दी फिर आपने कहा तुम्हें ये याद है कि मुझे गालियाँ पड़ी अच्छा इसके वो बहुत पड़ चुकी है अरसे बाद इसके कितने से because I remember you were in खबरनाक मजाक रात कहाँ खतरनाक मजाक रात में खतरनाक मैंने बोला खबरनाक बोला है खतरनाक ऐसा कोई शो बना ही नहीं है तुमने मेरा बैग देखा गाइस क्यूट है so cute तो मजाक रात में Aima how did you make it to मजाक रात like yes just randomly one day no struggle nothing huge happened. struggle behind nothing happened randomly for me just FYI it क्या नहीं यानी कि वो बेचारी गुड यार उसकी तुमने मेहनत मेहनत की है मुझे मैंने बेचारा और फील किया है था। तुम्हारे मैंने और ये और तरसीला नहीं था ये और था ओहो नहीं था ये था ये था ओहो yeah nothing happened ये वाह वाला easily. इंग्लिश था I'm not gonna lie nothing was easy for me or I think for anybody was it easy for you no right Of course and not. then you looked up because I think you were having flashbacks of your hard times probably the thing is when I invite guests now when they share their stories sometimes like my stories are also relate, similar हाँ. मैं कहता हूँ यार मैं भी अपनी किसी दिन सुनाऊंगा मुझे कभी मौका नहीं मिला अपनी तो stories आज मिलता है ना मिला आपको मौका मिल गया I will तू continue कर जानी अंकल I will मैं बुजुर्गों की बहुत इज्जत करती हूँ मैं बुजुर्गों की बहुत इज्जत मुझे लगा करती ये एक और स्टोरी आने लगी यार अंकल पाइनएप्पल पेपरोनी की मुझे जरा पेपरोनी नहीं था पाइनएप्पल पैनकेक था अंकल बुला ही लेते उस दिन अब मुझे कोई बताएगा पैनकेक पे पेपरोनी कौन डालता है अंकल्स अंकल जो pineapples ये वाले डालते हैं। अंकल सुबह उठ के जो अखबार खोलते हैं अपनी चाय मांगते हैं I bet you do that Shavir I bet you ask your I wife don't to look do at that अखबार मैं चाय सुबह उठ के नहीं पीता मैं कॉफी पीता हूँ फर्स्ट हाँ चलो कॉफी वो के खुद साथ बनाता हूँ ये मैं वलायती अंकल है मैं ना खुद बनाता ये हूँ वलायती है और मैं टीवी देखता हूँ तुम्हारी कॉफी में क्या होता है विदाउट पानी। मिल्क No like what do you mean पानी ब्लैक कॉफी अच्छा straight up black coffee straight up black coffee just to like prove it to yourself that I can drink black coffee or you like black coffee I love black coffee I've been drinking it for 4 years 4-5 साल हो गए इसने पसंद करवा ली अपने आप को हाँ मैंने जबरदस्ती taste पसंद develop करवा किया। ली ठीक है हाँ ठीक है I like the कभी taste of कभी it too. आयमा चीजें ऐसी जिंदगी में होती हैं जो जबरदस्ती पसंद करानी पड़ती हैं Name one ब्लैक कॉफी छोड़ चल छोड़ किसी और वक्त बात करेंगे अच्छा मैं फिर हाँ खबरनाक का यार तुम बता रही नहीं थी यार क्या? मजाक रात है क्या है मजाक क्या है? सॉरी है, मजाक रात माय बैड ये मसला क्या है मुझे एक और बात याद आई है एक्चुअली मैं अभी लंदन में थी कुछ टाइम पहले तो मेरा एक इंटरव्यू को ले रहा था बंदा
वो बंदा आया मेरे पास, बड़े प्यार से उसने मेरे से स्टार्टिंग में बात शुरू की, हमने आपस में बात भी शुरू की, फिर आगे से वो कहता है, मैंने शायद कुछ इंग्लिश में बोला, कहता है वैसे आपका मसला क्या है, आपका मसला क्या है, क्या आपका मसला जो आप अंग्रेजी में बात करती हैं. And for a moment I looked up and I was like, yo, ये मिस, rather than like getting angry or anything, मुझे हंसी आ गई. जिस सबसे पूछा उसने कहा आपका मसला क्या है, आप आज बता दें आपका मसला क्या है. Like what do you mean? So हाँ, that's what I was. मुझे याद आ गया. आपका मसला है क्या पार्टनर, आपका क्या मसला है? मैं by the way एक्सेंट वाली बात तुम्हारी कंप्लीट कर दूं एक. जो एक्सेंट वाली चीज है ना, it's a very weird dilemma. It's very dilemma. ये पर शुरू हो गई है. इसको बचा ले. थोड़ा मुश्किल हो रहा है. बहुत बड़ी मुश्किल हो रही है. बहुत मुश्किल हो रही है. मैं कह रहा हूँ कमीज तो मैंने. ओ यार गुड यार, ये मैं बता रहा हूँ ये हमारी गैंग की है. इसको पता नहीं है ये हमारी गैंग में है. हमें लेकिन पता चल गया. हमें पता लग गया, हम पहचान गए. बहुत अच्छे तरीके से पता है, इसको बिल्कुल नहीं पता. हाँ, क्या बता रहे थे आप? वेरी डिलेमा जो है. It is very what? It's a dilemma के very से start हुआ था. हाँ, very big dilemma in my life that when I go to Canada मेरा accent जबरदस्त हो जाता है. उसके बाद जैसे ही मैं पाकिस्तान आता हूँ तो मैं अपनी खुद की पॉडकास्ट देख रहा होता हूँ अक्सर, और मैं कहता हूँ ये बहस की मैंने कब बोला, ये मेरे अंदर से कौन बोल रहा है, ये कौन बोला है. उस दिन by the way मैंने I was watching one of your podcasts. You should be thankful to it. I'm kidding. You're welcome. I'm kidding. I hope you learned some things. और मैंने देखी भी एपिसोड कौन सी, वो लौंडा वाली. Londa talk. Yeah. Oh, exactly. That was nice. So everybody was talking in Punjabi and loser, you were the only person जो कि पंजाबी में. loser वाली क्या बात है यार, मैं पंजाबी नहीं बोल सकता तो इतना ज्यादा नहीं, मैं सुन सकता हूँ, मैं समझ पूरी लेता हूँ. अभी ये बता, कभी बोल नहीं पाता. तुम्हें आती है पंजाबी? मुझे समझ बहुत कमाल आती है. I used to work at खतरनाक. I used to work at मजाक रात bro. तुम बोल सकती हो पंजाबी? मुझे थोड़ा सा सेंटेंस बनाना पड़ता है, बट मैं बोल बना सकती लेती हूँ. हाँ बोल लूंगी, शायद बोल लूंगी. बोलो. की बोला 10 मैनू पूछो ना क्या. अच्छा कुछ भी 10. आज तेरा दिन किਵੇਂ गुजरा? हाले ते मैं उठी हाँ, फिर इथे आ गई हाँ. बहुत हो गई मेरे लिए, ठीक है ना. लूजर. Oh my God, it wasn't that bad वैसे. क्या कहती है? नहीं बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना. तो निकल गई ना, एटलीस्ट 2-3 लाइनें निकल गई बस, काफी है ना. पंजाबी जिन लोगों को नहीं आती उनके लिए बहुत यार, वी आर बायलिंगुअल. मैं यही कहने जो गोरे होते हैं वो खाली इंग्लिश बोलते हैं, उनको कोई लूजर नहीं कहता. हम उर्दू भी बोल लेते हैं, पंजाबी बोल लेते हैं, हिंदी भी बोल लेते हैं, इंग्लिश भी बोल लेते हैं, अरबी पढ़ लेते हैं, लेकिन समझ नहीं आती. नहीं, मुझे थोड़ी थोड़ी आती है. हाँ गुड यार. और मुझे कोरियन भी थोड़ी समझ आती है. समझ आता थोड़ी बहुत, लाइक फ्यू, जब क्योंकि मैंने कोरियन चाइनीज वगैरह तो ऐसी लैंग्वेज है. चाइनीज तो बिल्कुल नहीं आती, समझ ही नहीं. आपको समझ नहीं आता. चाइनीज का खाली एक फ्रेज बोलना आता है. क्या एक फ्रेज बोल? वो क्या है? नहीं. रेडियो नी चाओ सममेंस. That was actually really, I have to say that was good. इसका मतलब क्या था? मतलब कोई हमें बताए किसका मतलब? क्या मतलब है? It's a question. What's your name? उससे समझ आ रही है हमें. What's your name? अच्छा. जब मैं चाइना कॉल करता हूँ ना, मैं यही पूछना. नहीं चाहो. मुझे आता है अनाजिया. ठीक है. That means like hello, how are you? And then I know sarange. Sarange means I love you. Sarange in Korean. Why did you do सारंगे? क्योंकि मैंने ना वो सीजन बहुत देखे तो उनमें वो सारंगे बहुत यूज करते हैं. तो सारंगे इतना जब बोलते हैं ना, ओप्पा सारंगे and all this kind of things, तो फिर you catch up to it. तो मेरा भी यही सीन है. ऐसा नहीं है catch up to it. We catch up to what? Love? Catch up to yeah. Catch up to catch up. You fall in love. Yeah. You watch Korean shows and you fall in love. Yeah. तुम्हें लगता है जो टीवी में हो रहा है ये मेरे साथ भी होना चाहिए? पहले मैं समझती थी ये बात, पर नहीं, फिर मैं बड़ी हो गई. आपसे बड़ी नहीं यार. हम अभी मजाक रात में पहुंचे ही नहीं है. तुम्हें पता है ये बात? नहीं, मैं जानना चाहती हूँ कि हम कैसे पहुंचे. वो हम ऑफ पॉडकास्ट मजाक में आएगी. रात में मजाक लोग बहुत कमाल थे. they treated me like a baby, to be honest. like मैं टाइम पे बिल्कुल नहीं आती थी क्योंकि मुझे पता था कि they're gonna crack the same jokes over and over again. Every day there used to be a new audience. For them it was, those jokes were new, but to me I was going through those jokes for the past couple of years. So मैं उस टाइम तक नहीं आती थी कि जब तक इनके वही जोक्स चल रहे हैं, you know. So they just used to insert me there while just doing this. So sometimes like उनके कुछ jokes in the beginning इतने heavy होते थे, like heavy, like you know, like सही जुगते होती थी कि मेरे ऊपर से गुजर जाती थी. Sometimes I'd be like,
since everybody's smiling, I'd be smiling too, and then my director would be like, clap. You know, like clap and smile, and I'd be like, oh, okay, yeah. And then one day, I was just like humming a song. I'm not gonna lie, so I'm gonna be honest over here, since it's an honest hour. So वहाँ पे एक सिंगर आए, एक दफ़ा उन्होंने गाना गाया जो मुझे बहुत पसंद था एक मूवी का, और फवाद आए हुए थे, फवाद खान, साथ कोई और भी था, मुझे वो याद नहीं, फवाद खान बैठे हो तो कोई और याद आए. सो उन्होंने वो गाना गाया, अच्छा था, ठीक है, पर बहुत अच्छा नहीं था. I went to the bathroom and I literally cried. I was like, oh my god, this song was being butchered in front of me. Wait, what? Yeah. Actually, कोई और गाना गा रहा था और तुम्हें रोना आ गया? इससे क्योंकि बहुत बुरा गा रहा था. Shit. Yeah. So the next day, I was just sitting with Wasi. So Wasi is like one of my oldest friends in this industry. So I don't have too many, I have acquaintances, I'm going to say. Everybody's an acquaintance. Like, I don't have beef with nobody. Like, you can name my name in front of anybody and then they be like, fine, she's boring. She does not pick up our calls or reply or whatever, but she's not a bad person. Because I've never had a beef with anybody. तो एक्शन वापस आ रहा है, वापस आ जाए. नहीं ठीक है तुम स्विच, तुम छलांगे मार रही हो. बेहतरीन है, हमें समझ आ रहा है बस. Okay, as long as you guys are understanding, then I can also talk in very good Indian accent. बोलो. हाँ, अच्छा ठीक है, क्या बता रही थी? के वासे हाँ, he's one of my very अच्छा, उसके साथ मसला ये कि I try not to hang out with him too much because he knows a lot about me. You see, when somebody knows too much about you, then it's like hard to impress other people in the room, you know. It's when hard somebody knows too much about you, the people that you don't want to hang out with, like imagine like तुम किसी की कॉल नहीं उठा रही क्योंकि उसको सब कुछ पता है तुम्हारे बारे में. Shit. और हल एक ही है कि ये बंदा चला यहाँ हो ना, बस रहना ये ज्यादा मुश्किल है. मुझे मिलता है, he always has this like a smirk on his face and smirk with raised eyebrow, okay, like what the hell, bro? I know everything about you, so don't try to act like too cool in front of me, which I'm not. But तो वो सीन अच्छा था, गुजरा. वहाँ तक मैं कैसे पहुँची? Okay, I'll tell you. So I was studying film and television. वहाँ पे मेरे एक प्रोफेसर थे, उन्हें कहा तुमसे फोटोग्राफी तो होगी नहीं. See, हमारा एक सब्जेक्ट था फोटोग्राफी. Although I still think I'm good at it, he hated me. ठीक है, उसको लगता था कि मैं, वो अभी एंटर होते थे ना वो क्लास में, तो वो कहते थे इसको तो साइड पे बिठा दो क्योंकि इससे तो पढ़ना नहीं है, तो बाकियों को तो मैं ज़रा फोकस करूँ. मैं भी लाइक ओके फाइन. उन्होंने मुझे एक दिन लाइक वी हैड दिस वर्बल, क्या कहते हैं उसका, एक नाम होता था कि आप थीसिस आपको सुनाना होता था अपना, क्या लाइक पता नहीं, मैं क्या नहीं, बहुत टाइम हो गया पढ़े हुए. पढ़े हुए बहुत टाइम हो गया. सो उन्होंने कहा कि सब कुछ छोड़ो. उन्होंने मेरी पिक्चर्स देखी, आधी देखी और रख दी साइड पे. जो बेस्ट आने वाली थी ना एक, उस पे ही उन्होंने साइड पे रख दिया. मैंने कहा ओके, अब गेम शुरू हुई है. ऑलराइट, रेडी हो जाए. I'm all ears. Like you टेढ़ी होके I'm all ears. बेस्ट पिक्चर इतनी नीचे रखी क्यों? मतलब सबसे ऊपर तो रखनी थी यार. मैं चाहती थी कि तरह ही भी लाइक this actually what उसी पे उन्होंने साइड पे रख दिया. वो उसी टाइम कैसे बनाया. और ऐसे भी साइड पे नहीं रखा कि देख के, उन्होंने ऐसे साइड पे रखा. So like he never even had a glimpse of that picture. Oh shit, okay. You know, so one of those teachers. अच्छे थे, ठीक है. And then उन्होंने कहा कि I have a job for you, by the way, because I feel like you're like अच्छे क्यों थे. हाँ, he's like I have a job for you. I'm like okay. When he said that, like that, just the way that I just told you guys that I have a job for you, I got a little shade. He sounded a little shady, and I was like, okay, I'm here to study only. He said because okay, वो मुझे शुरू से कहते थे कि अगर इसको किसी प्रॉब्लम से निकलना है ना, तो ये कुछ भी ये बोल लेगी. ये she can get us out of a situation for sure. Like put her in the most toughest difficult situation जिसमें कसूर सिर्फ इसका होगा. But somehow she's just gonna like, does that make me a manipulator? Am I calling myself a manipulator, like literally myself? पता नहीं, are you? Am I? No. Does that make me? No. You're why are you laughing? Self-confident. You have to say something. नहीं मैं शादी की बात पे ऐसे शादी तक नहीं, that's not a manipulation. यार, anybody who can take themselves out of a difficult situation is a problem solver.
That's how I look Yeah, at it. I okay. consider Positive myself side. as a problem solver. Okay. I think okay. I can get out of situations pretty Really? good. Yeah, of course. Yeah, I feel like you can. हाँ. So इसीलिए तुमने मुझे उस दिन बर्थडे पार्टी पे तुमने प्रॉब्लम सॉल्वर yeah, थोड़ा सा आ जाएगा तो मेरा मुझे कम जरा कॉन्वर्सेशन लोगों के साथ करनी पड़ेगी. Exactly. See. So उन्होंने मुझे कहा कि you're like a firecracker back then and I was kind of not anymore. तो उन्होंने कहा कि I have this show for you. I think you should sit down there and blah blah blah. Anyways, long story short, मुझे एक दिन उन्होंने गाते हुए सुना. उन्होंने कहा what the hell, you can sing? And I was like, that's what I always wanted to do. I always wanted to only sing. And they were like, why aren't you singing then? Because I was like, you already have somebody singing and just singing the songs. I'm not going to say much. So, and then फिर मैं भी गाना शुरू हो गई. फिर then वहाँ गाने से फिर मुझे playback singing मिल गई. मैंने बंदे आऊ गाया. You know, that was my first track. Yeah, that was the first track I did with Khavar. You were in that song. Yeah. And then फिर मुझे कलाबाज दिल बेफिक्रिया and all that item number and all that. फिर back Coke Studio start हो गया. And then when I started doing Coke Studio, फिर मैंने कहा यार मुझे बैठने की जरूरत थी. I think Coke Studio made you international as well. Like it just gave you that extra legs to run on. It's just so funny because I'm like very imaginative, so I was literally thinking two other legs. दो extra टांगे. Yeah, and I was considering myself as a spider. दो extra टांगों पे वो भाग गया. Coke के logos लगे हुए टांगों पे. क्योंकि मेरे imagination बहुत strong है. I'm a Pisces, you know. Pisces की imagination बहुत strong होती है. Libras की भी होती है शायद. Sagittarius को समझ ही नहीं आ रहा है ये लोग क्या बात कर रहे हैं. Sagittarius are money makers, by the way. Thank you. But like, are you? Of course. That's the question. कितने चाहिए बोल? Of course. You कौन सा वाला of course? ये कौन सा वाला of course था? Of course. खैर. So yeah. क्या? नहीं तुम्हारा डन हो जाता है फिर तुम सोचती है अब और क्या बोलूं हम. हाँ अब क्या बताना मैंने. नहीं गुड यार. मैं कह रहा था कि Coke Studio made you international. I think that and also Kalabaz Dil, because people were like, oh, that's Rekha Bhardwaj's voice. But it really was not. It was me just like, you know, imitating or probably just like... Who? Rekha Bhardwaj ji. Yeah, TV पे breaking news हर मेरा घाघरा बगदाद से लेके दिल्ली मारा वागरा. That was the women. Oh, Madhuri Dixit. And in that song that was you. नहीं. No. Wow, amazing. मैंने कहा कि I was imitating her. I thought कि you said कि I was imitating her. Slow clap for Shadi. यार क्या यार मैं तो actually genuine question पूछा है. बनती है. तो ठीक है बनता है partner. अच्छा तो तुमने वो गाना गाया. हाँ मैंने वो रणबीर और माधुरी भी जो गाना शुरू किया वो मैंने गाया. ठीक है वो गाना मैंने गाया. उसके बाद से मैं फिर इंटरनेशनल हो गई यार. इंटरनेशनल उसके बाद से मैं इंटरनेशनल हो गई. बस यही तो चाहिए था मुझे. उसके बाद में इंटरनेशनल ब्रेक चाहिए थी वो माधुरी से. मैं एक्चुअली पता है मैंने ये क्यों बोला इंटरनेशनल बिकॉज़ आई रिमेंबर आतिफ असलम का मैं एक दफा इंटरव्यू सुन रहा था. आतिफ असलम सेड कि यू नो आई वाज डूइंग अमेजिंग एंड ऑल एंड एवरीथिंग बट देन आई वेंट टू बॉलीवुड और उसके बाद मेरी इंटरनेशनल ग्रोथ बहुत ज्यादा हो गई. तो मैंने कहा आफ्टर कोक स्टूडियो टाइम बहुत अच्छा था वैसे. या दैट्स ट्रू. हां क्योंकि तुम लोग को इंडिया में ज्यादा गाने गाने का मौका नहीं मिला. वी हैड नो मतलब कोई मसला नहीं था. मतलब किसी को कोई मसला ही नहीं था ना. मैं सही वर्ड यूज करना चाह रही हूँ. आई डोंट वांट टू लाइक एक्चुअली यूज द वर्ड्स दैट आई वांट टू यूज. यू नो व्हाट आई मीन. या बिकॉज़ यू डोंट वांट टू ऑफेंड पीपल गेट ऑफेंडेड बाय मी एनीवेज. ठीक है ना. तो ये वाला सीन चल नहीं रहा था कि हाँ इंडिया पाकिस्तान नहीं हो सकता. जैसे हमने 5 गाने वहाँ पे किए हैं. मेरे साथ मेरे कुछ फेलो मेंबर्स भी हैं जिनको आप सब भी जानते होंगे. हमने वहाँ पे गाने 5 गाने किए हैं फिल्मों के लिए वैसे किए हैं. एंड देन जैसे हमने किया ये वाला सीन स्टार्ट. अच्छा they didn't come out the songs that you sung? Yeah but they will eventually one day. Otherwise what we're gonna do is that who did you do the songs with? So like one of the songs is from a movie जिसके अंदर सैफ और करीना साथ आ रहे हैं.
So अभी आने हैं वो. Like these are all the movies जो कि आ रही है ना. Wait, ये तुम पहले की बात कर रही हो अभी की बात? नहीं, रिकॉर्डिंग पहले की. रिकॉर्डिंग तो यार तब की हुई नहीं है. Like गाने तो तब के रिकॉर्ड हमने दुबई में किए थे. They never even let me enter India, to be honest. It was just like a whole drama. It was like a whole scenario, to be honest, because हाँ वो तो obviously है issues अभी भी. सब लोग दुबई में ही करते. हाँ तो दुबई में किया सारा कुछ जो भी किया. Pretty much work with amazing producers जिनके साथ मैं करना चाहती भी थी. अभी कुछ रहते हैं obviously, but अगर नहीं हुआ कुछ तो फिर I'm gonna release them over here. You have the rights to those songs? No. Then ले लेंगे. I think I know a thing or two about rights. इधर कर देंगे रिलीज. हम इधर रिलीज कर देंगे. आवाज तो मेरी है, मेरा ही राइट है. मैं उनको राइट नहीं दे रही. मैं सिर्फ उसी को बिलीव करती हूँ कि आवाज तो मेरी आवाज रिलीज करने का मैंने राइट नहीं दिया उन्हें. हाँ बस ये सवाल पूछा था शावीन ने, do you have the rights to? I was like no. I don't, because I don't think so. I have. So you can't release them. Okay, I will find a way. I mean, like you can't release them, but yeah, if you really want to. अपनी WhatsApp conversations लगा दो YouTube पे. I'll tell you something about it. I think because वो थोड़ा boring हो जाएगा. I think podcast के लिए, but there's a certain way you can actually do it. अच्छा, चलो वो करके दिखाना हमें. Release करके. हाँ, it's something very verbal. I don't need to do anything physically. क्या मतलब? Reset करके दिखा. podcast में अब कोई इतनी बड़ी बात नहीं. It's okay, नहीं ज़्यादा boring होता. नहीं यार, reset करके दिखाना ना, तो मैंने कहा करके. मैं क्या release करके. मतलब murder हो गया इधर मेरा joke, so let's just move on. हाँ, you know the murderer, uncle murderer. Uncle murderer. Yeah. कातिल uncle. Thank you. कातिलाना uncle. Uncle कातिल. यार ये वैसे अच्छा निकनेम है पॉडकास्ट के लिए. Uncle कातिल. Uncle killer ठीक है. अब मैं यही सेव करूंगी. Uncle killer. शावीन ने अपने फोन पे हर बंदे के नाम के आगे 5-5 नाम लगाए हुए स्लैश के साथ. मेरे क्या लगा हुआ? तुम्हारा भी किया नहीं, अभी मैं करूंगा. तुम अभी रुको तो सही, बल्कि ये अच्छा आइडिया दिया. मैंने देखो मेरे जो नाम लिखे हुए निकनेम्स रखे हुए. अगर इसका फोन बजता है ना, तो अगर गाड़ी में बजे या कहीं बजे तो 2 मिनट सोचने में लग जाते हैं कि फोन कर कौन रहा है. बिजली कर रहा है, हैंगर कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है. मोहसिन भाई का है बिजली, लॉजिक, चोस, टून भाई. टून का क्या मतलब है? या टून का ये है कि these are like little memories that just keeps the friendship relevant. It was like one day हम लोग नथिया गली में थे, तो वहाँ पे ना मोहसिन भाई इज अ गिटारिस्ट. तो वो गिटार बजा रहे थे, तो like his brother was singing a song. हम लोग सारे एंजॉय कर रहे थे. वो बॉनफायर रात का वक्त था, तो साइड पे ना कोई 5-6 लोग थे, वो म्यूजिक सुन के ना वो भी एंजॉय कर रहे थे. वो लोग भी वहाँ से गाना शुरू हो गए हमारी बीट के ऊपर. तो फिर हम लोग ने रोका. फिर वो उनमें से ना कुछ लड़के आए, वो थोड़े बदतमीज से नहीं होते वो जो बॉयज से. तो वो आगे कहते भाई इसकी बर्थडे है, इसकी बर्थडे के लिए गाना गा देना. बिल्कुल इसी तरह, भाई इसकी बर्थडे है, इसकी बर्थडे के लिए भी गाना गा दे. मौसम भाई ने कहा अच्छा जी चलें बजा देते हैं. मौसम भाई was putting his guitar back on his lap and he was about to sing. The guy literally goes like, he touches his face like this. भाई टून तो बजा दें. टून तो बजा दें. Why is it so normal? अच्छा मेरा क्वेश्चन पता है क्या? Why is it so normal in Pakistan for people to touch each other? You know what I mean? They be holding hands and everything. It's just really weird. Yeah. Personal space. We spoke about this in the podcast. Okay, do you want to talk to me? इधर आके क्यों बात कर रहा है? Didn't I say this? Like मेरी आंखें बीच में, literally मेरी आंखें बीच में आ जाती है sometimes looking at them like yeah. My vision gets blurry, like they're so close. They're so up close. क्या आप कहते हो? थोड़ा mic close ले आओ. Exactly. Oh, I'm sorry. Thank you इस बार बोलने के लिए. I was living the moment. हाँ मैं बहुत, because वो दिल से निकल रहा था ना कि लोग इधर आके बैठे. पाकिस्तान में पर्सनल स्पेस का मसला है. अगर तुम लंदन के अंदर तुमने नोटिस किया हो कि like a good space to talk to somebody or have a conversation is this. Yeah. Respect each other is personal space. ये तुम्हारा एक एरिया है, इसके अंदर कोई नहीं एंटर हो सकता. And then they won't keep like they're not too handsy either. No, they're not. But it's considered inappropriate to touch somebody without their consent as well. Yeah, like I just show you this video जो मैंने अभी फैसलाबाद में ना कॉन्सर्ट किया रमजान से पहले. तो उसमें I mean I love it when people are singing along with me. Honestly speaking, I think I live my life like I literally just like live my life, especially when I'm on stage and people are singing and all that. But it's just that what I don't understand is कि एक टच करने से क्या मिल जाएगा? You know what I mean? Like
You know what I mean, right? I understand what you're saying. Yes. Yeah. Like especially if you're like a little like touch conscious, then obviously you're not gonna. Like मेरी तो अम्मी मुझे गले नहीं लगाती थी. मैं पता अच्छा okay मेरी अम्मी मुझे कॉल करती थी, मैं कहती थी अच्छा okay अम्मी I love you, मैं कहती थी I love you back, goodbye. She was that like वो इतनी ज़्यादा awkward. Let's just say awkward, but like she was just not handsy at all. She didn't like touching too much, but प्यार बहुत था. Yeah. But like टचिंग में नहीं, ठीक है ना. मेरा बिल्कुल ऑपोजिट. आप दोनों बात करो ना, मैं बिल्कुल रिलेट नहीं कर सक रही क्योंकि मैं बहुत मारती हूँ साथ वाले को. हाँ तुम बहुत अच्छी फीलिंग, बहुत. हाँ तुम बहुत अच्छी फीलिंग, तुम प्रॉपर. लेकिन फिर वही बात है ना कि मैं आप हर बंदे का एक एक्सप्रेशन डिफरेंट होता है ना. तो मेरे साथ जो बैठा होगा ना, अगर मेरी उसके साथ मेरी फ्रैंकनेस उसके साथ इतनी ज्यादा है ना कि मैं उसको टच कर सकती हूँ, तो फिर मेरे लिए ये इजी होता है कि मैं रिलेट कर सकती हूँ कि ओ तुमने सुनी ये बात, ओ हाँ, ये तो मैं भी करती हूँ. लाइक ये अगर फ्रैंकनेस चल हो गया ना, हाँ जाहिर है हर किसी के साथ तो आप नहीं कर सकते. But like I'm talking about being at a concert and then people poking, कहीं से उंगली आ गई है. Oh, but Aima, they want a part of you, like literally. I really like they with rock stars, I think that's like a thing. Don't like literally grab a part of me, na. That's exactly what they want to do. You can have a part of me, of course. हाँ. Don't grab a part from me. खींचो मत. नहीं ये तो खैर तुम्हारा एक साइड से गुर्दा निकाल के ले गया कोई. तुम तो लड़की हो, तुम्हारी तो लाइक एक एक्सक्यूज भी है कि लड़कियों का तो चलो फिर भी you know you shouldn't touch feely और वगैरह. बेचारे लड़के ऑनेस्टली यहाँ पे मैं थोड़ा सा उनका साथ दूंगी, वो फिर थोड़ा डर जाते हैं. वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम ये हो. लड़कियां तो वो कहती है nah bro, we got this. We have all the right, which I love, which is great, but sometimes you know कि आप लोग concert पे होते हो, आप छलांगे मार रहे होते हो, you sweat and then you don't smell well, and I have this pet peeve. Yeah, I mean I can only relate to you. Like एक दो दफा मेरे साथ ऐसा हुआ where I truly felt like a rock star was when I came to Pakistan for the first time. तुम लोग का तो everyday का scene है ना. With actors, I think actors don't get to meet the audience as often. सही है. तो जब मैंने पहला मीट एंड ग्रीट किया ना पाकिस्तान में, it was like the biggest thing for me, obviously. Packages के अंदर हम लोगों ने call out किया और वहाँ पे when I was going, nobody expected, so there was like very little security, probably like 7 or 8 guards in total. And packages पूरा बंद हो गया था, बाहर से अंदर से सारा बंद हो गया था, right? जो सारी इमरजेंसी एग्जिट थी, तुम्हें वहाँ से निकाला था. Exactly. तो जब वो हमें लेकर आ रहे थे ना, उसकी वीडियोस अभी भी अवेलेबल है. I had like a camera in my hand, and I remember my face was like this because people were holding on to my face. मेरा गला पकड़ा है, लोग मूंछों वाली पपियां दे रहे हैं मुझे, गीली गीली पपियां दे रहे हैं, और मुझे वो समझ नहीं आ रही ये किस अंकल के होंठ लग रहे हैं मेरे साथ. और इनमें से कौन सी यानी कि लिटरली I had scratches. एंजॉय भी नहीं कर सकता ना बंदा. बताऊं कौन सा वाला? नहीं, एंजॉय बंदा तब तक करता है जब तक प्यार हो. जब आपको पता हो कि कौन कर रहा है ना. ये कुछ और था. ये प्यार नहीं था, क्या था? ये चिपक रहा था, ये चाहत थी बस. सही है. तो मुझे people scratched me, my back was all scratched up, and that meet and greet lasted for maybe 8 minutes or 7 minutes or something like that, and then I left, and then that's the only time I felt like a rock star. So I was actually going to come to this point that with singers, I always wanted to be a performer. All my life, really? I wanted to be a performer. Can you sing? I can't sing, no, that's the thing. But I'll tell you why I wanted to be a performer. So he can sing. So no, the reason why I always wanted to be a performer, in other words, singer, was, to me, I think the biggest dopamine hit is कि आप अपने फोन के ऊपर कोई लिरिक्स लिखो एक दिन, और उसके कुछ सालों बाद या महीनों बाद 50,000 people are singing with you. Wow. I think that power, that level of influence, that level of power, like you cannot feel similar with any other art form. Actually, other than singing. Yeah. Because like imagine like my Drake ke concerts मैंने देखे हैं where he's, you know, just there and people are jumping and people know exactly what beat comes when, which lyric goes where, and that story भी लगाई थी अपनी. हाँ, that was Chester, that was Linkin Park. Yeah, when I was literally in अभी London में Chris Brown का concert था, so Chris Brown is one of my, you know, he was everybody's crush, even mine. See, even my brother said that. He's like, oh, even I have a crush on him. I was like, okay. Like the man. So मैंने उसका concert attend किया and it was just like, it's like a dream come true, honestly, to be very honest. Yeah. But whatever you're telling right now, कि वो जो moment होता है कि everybody's singing now, your work, you know the journey of the song, but now everybody's singing that song.
That's a different feeling. The song was your baby. It was like your little baby that you cared for, you made, you created, you nurtured. Did you just read my journal or something? No. Because I literally said this. Like, you did? Yeah. And now it's everybody's baby. Now everybody owned that baby, right? Okay, yeah. So that level of power, like that level of influence, you must love all the concerts. I definitely love. I think that's the only thing so far now at this stage of my life. I think concerts are probably the only thing. That's why I'm doing all of it, and the music. That's keeping you afloat. That's because the kind of songs that I've been doing in my past are not really something that depicts who I really am in person, as you guys can tell. Don't you guys can tell that? Like, I've been singing Sindhi, I've been singing in Balochi and Punjabi and all. Punjabi, which I am, but I've never been so fluent in Punjabi. So when I say Punjabi, it comes with the heart, you know, Punjabi. Anyways, so yeah, so I don't know anything about Saraiki. I don't know anything about Balochi, these languages, but I'm just doing it for the sake of masses, which I love. But then yet again, there's no certain identity of who I am, what kind of music that I want to do. So now after Eid, I just recently got done with the first, people have been calling it album, but I'm going to call it the first chapter. Ah, interesting. So, because it is a chapter 6. So, Chegane? Chegane. Nice. And then they're like completely, people be like, is she on PCP or something? I don't know, but like they're definitely gonna be like, okay, this is different, because this is who I am now. I think this is the right time for me to actually tell people that, okay, this is my music. If you want to love me for this too, love me for this too. Then if you really love me, then love me for this too, you know. और इससे पहले जो मैं गाने करती हूँ, I'm not gonna say that I don't like folk. I love folk. I love Punjabi music. I love Urdu music. They're like, you know, whatever. But I'm not gonna lie, I started off as a Western singer, to be honest. तो in the beginning, लोग तो मुझे हायर से इसलिए कहते थे कि वो आपकी आवाज़ में जो अब एक्सेंट लेके आ रही है वो लेके आए. तो मैं कहती थी अच्छा, but don't you want like Urdu songs? So isn't it like a Urdu song? So you want Urdu accent? And then there are certain songs जो मैंने किए हैं जो कि आप बता ही नहीं सकते कि अच्छा ये किसी ऐसी बंदी ने गाया हो जिससे ABC भी बोला जाता हो, because they're like that desi. So फिर मैं भूल गई बात, तो मैं भूल जाती हूँ. Like it's not your type ना, basically you were talking about your type ना, कि people who know me they be like of course she forgot. क्या नहीं ना, you were talking about your type. क्या भी है, तुम हंसी ना रोको, ठीक है ना. तो मैं कुछ कह रहा हूँ, तुम हंसी ना रोको, तुम लाल हो जाते हो जब तुम हंसी रोकते हो. जब तुम हंसी रोकते हो तुम लाल हो जाते हो. स्किन एलर्जीज. हाँ, स्किन अभी कौन सी स्किन एलर्जी एकदम किसी बात है यार, कोई पता नहीं क्या स्किन एलर्जी है. तो क्या था वो क्या था टाइप क्या मेरी टाइप? हाँ, कि वो भी एंजॉय करते. बोल दे जानी, बोल दे प्लीज. मेरी टाइप. वैसे व्हाट्स योर टाइप? What's my type? By the way, are you in a relationship, in a complicated situation, a single right now human? Who are you? I'm a single human. You're a single human. You're one. So and okay, only. nobody's asked me yet. तो मैं क्यों कहूँ कि मैं single नहीं हूँ. मेरे को समझ नहीं आई. नहीं, मेरे को भी नहीं आई. मैं दोबारा wait. Let's just like rephrase it. हाँ. So nobody's माइक पास like ले आओ बस. क्या बोला? माइक पास ले आओ. क्या बोला? मैंने सही बोला. क्या बोलने के लिए क्या रहा है? क्यों बैठी हुई थी क्यों? देखो ना, एक होता ना यानी नजाकत से, यानी ये nobody has asked. क्या बोला? तू क्या बोला? ये तुमसे लड़ने के लिए तैयार है. तू रिप्लाई किया? तू रिप्लाई किया कि क्या कह रहे हो तुम क्या कह रहे हो? हाँ, तुम सब छोड़ो, तुम क्या कह रहे हो? देखो, nobody's asked me out. तो मैं ये नहीं कह सकती it's complicated, I'm in a relationship, because nobody asked me. Nobody asked you out. तो ये basically like how whatever I know about girls, ये message दे रही है जिसको भी देना है इसने कि देखो भाई, you haven't asked me out, so this is the time, because मुझसे एक दफा पूछ लिया गया है podcast के ऊपर कि am I single or in a relationship, and since this person hasn't asked you out, you're single. पहुंच गया भाई कि नहीं? आगे साइंस जा रहे हैं. पहुंचा देंगे तुम्हारी बात, तुम टेंशन मत लो. ये हम हाइलाइट्स में डाल देंगे ना शुरू में, ताकि पता चल जाए कि ये एंड तक सुननी है बात.
Well, आपने जो भी समरी दी है वो परफेक्ट है, ठीक है? So I'm just gonna say stick to my comment कि nobody's asked me yet. Nobody has asked you out. That's fine. So that's fine. As do you consider boys to be complicated? You consider men to be complicated? Not all of them are complicated. I think sometimes women also lose their shit. Yeah. And I think, but there are very egoistic men out there too. Right. जिनको लगता है कि जिनको एक्चुअली वो ईगो नहीं होता, वो ईगो बन जाता है बिकॉज उनको रिजेक्शन से बहुत डर लग रहा होता है. So I think it should not be a thing about ego. I have a bubble in my throat right now. Let me just swallow that first. Yes. Yeah, so that I can. Assalamu alaikum. Hello जी. आप ठीक है? चाय ठंडी. ब्रेक के बाद एरियल. Blue. So हाँ, छोटी सी ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं. सारा टाइम मैं आंटी वाली आवाज में ना तुम लोग के पॉडकास्ट गुजार दूं, ठीक है? Anyways guys. Yeah. So yeah, if you so some guys are egotistic. Egotistic. Egoistic होता है, egotistic भी होता है, टिस्टिक भी होता है. हम egoistic कहते थे शादी से मिलने से पहले. It's fine. कर दो. सही है, जो भी है. चल, जो तुमने कहा कि लड़के जो होते हैं तो ये नहीं सिखाया उन्होंने मुझे. So some people are ego. को ये नहीं पता. लीसा कौन? लीसा कौन? लीसा जैक्सन यार. अच्छा क्या मतलब गैस बात कर रहे हो? बिल्कुल ही भूल जाते हो. हाँ, तो I think they're great men out there, of course. But आजकल मुझे एक चीज़ बस समझ नहीं आ रही, which could either be a good thing or a bad thing, कि लोग आजकल बहुत जल्दी एज में शादी कर रहे हैं. Do you guys have an answer? मेरी तरफ क्यों देख रही हो? मैं तो सोची थी कि ये भी कुछ आगे स्टोरी आनी है. पता नहीं क्यों लड़के जल्दी शादी कर रहे हैं. नहीं लड़के नहीं, जैसे लड़के नहीं, लड़कियां भी सारे जल्दी शादी कर रहे हैं. बड़ी जल्दी शादी कर रहे हैं. सुंदर नहीं. अच्छा नहीं, I was actually talking about girls as well. ये लड़का है तो इसको अपने पे लग रहा है आजकल समझ नहीं. शादी के लिए पकड़ लो बस. इसने लड़का नहीं कहा. नहीं, तुमने कहा लड़के. मैंने कहा आजकल लोग बच्चे रिकैप. खैर, और उसमें गलत निकली तो anyways. हाँ, लोग बहुत जल्दी शादी करें, which is a great thing too. I mean, being a young parent is, I think there's nothing better than that. बच्चों पे पहुंच गई. Yeah, no, because that's a legit thing. Because I've seen not my parents, I've seen my siblings getting married, not too early, but at a certain age where they can actually, they're like friends too. So I would want this for me too. Like I would want to be a young mom, or not just me, but for anybody, I would want them to be a young. If they don't, I mean, unless they don't want babies. I think being young parents, like there's nothing more beneficial to a child-parent relationship other than the fact that you're. But then like your a young entire parent. social life is just like. You have to give up some. You have to give up something. Some to nahi, yeah. You have to give up your entire life for a year. I mean, like when Aisha and I speak about this, and we go like, yeah, I don't think we're ready for it. क्योंकि हम लोग इतना शोधा लगा रहे हैं अभी अपनी जिंदगी के साथ. हाँ, अभी तो enjoy करो. If we have a baby now. So how long has it been, वैसे, by the way? Yeah, it's been a year and a half. अच्छा हाँ ठीक है अभी तो it's like the मतलब enjoy करने वाला time. हाँ अभी honeymoon phase I think maybe soon whenever I don't know. Yeah. Whenever it happens but like point is कि I really want to be a parent. Like I have that fatherly instinct now. अच्छा like I feel like it. I feel like it. अच्छा ठीक है मान गए ना. Because I feel like I'm also getting to the age where I don't want to be like 35 और मेरा 3 साल का बच्चा हो. You know what I mean? Because by the time I'm 50 कि मैं 50 का होऊंगा तो मेरा बेटा 18 का हो रहा होगा. That's too old for an 18-year-old. तो क्या तुमने सोचा है कि मैं 50 साल में मैंने सही बूढ़ा होना है? Yeah, you're gonna keep up. You know, I'm not like there's no like you don't have options. No, you have options. 50 साल की उम्र में आप बूढ़े ही हो. You know? नहीं आप maintain कर सकते हो but फिर वो डिफरेंस तो वही रह जाएगा ना कि वो एक पूरी जनरेशन का ये करना. तुम्हारे देखो नहीं लोग नहीं एक रिलेशनशिप भी और एक अपनी सेहत भी एक हर चीज मेंटेन करना उस टाइम पे. वो तो आपके हाथ में है. But then don't you feel like 50 already? No, I don't.
मुझे लगा ये actually question आया. She's like, she literally leaned in. She was like, don't you feel like 50 already? No. No, you really don't. You really don't. I actually do feel like. Unfortunate. Yeah, I'm 28 and I feel like 82. That is sad. Not sad. I knew you were gonna say that's sad. That is so sad. That is not sad. That is no me wonder being that guy mature. hasn't asked you out yet. Now let's just take a fucking break right here. I don't give a fuck about these fucking shit situations. He's a over here. ठीक है ना? I don't give a fuck if I'm gonna sing anymore or not. काट रहा. बेटा मैं तुम्हारे घर का पता लग गया, ठीक है ना? वो तुम्हें काट देगी. मैं काटने के लिए लेके आ रही होंगी, ठीक है ना? मैंने बहुत कर दिया है यहाँ पे. प्लीज हेलो कैमरास. 119 फॉल तुम्हारा ना, मुझे पता है इसका. अच्छा हाँ. So yeah. हाँ, so Yo, we were about to do this these series. We were about to do this series together. Remember that? मैं तुझे बताऊं कि तेरे पे तुम्हारे सर पे जब तक डंडा नहीं ना पड़ना तुम्हें समझ नहीं आनी. Hello. Seriously together. You're talking about 12वां खिलाड़ी and 12वां खिलाड़ी को 12 साल हो गए हैं बने हुए. हाँ. She was supposed to be next to me. हाँ, she was supposed to be next to me in 12वां खिलाड़ी. Then what happened? And then she just never picked up her Then phone. me happened. Then what? क्यों She क्या? never picked up her phone. No, it's not. It's That not that. I is think true. This is. तुम्हारी मैं कोमल से पूछूं? जाओ पूछ. ठीक है. नंबर दो. अब मायरा से पूछो. पूछा है. क्या पूछा? और दूसरे क्या मजाक बोला? कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये चीजें, लेकिन So all I know is that you never showed up or something or whatever. अच्छा. ठीक है. What were your reasons, by the way, for not doing 12वां खिलाड़ी? I don't want to make this podcast dark, but if you are asking for it, I'm gonna go real dark. Cause like my mom, she was उनको सिर्फ dark jokes आते थे, you know what I mean? So हम लोग सारे बहन भाई बड़े dark बड़े हुए हैं. कोई बात नहीं. मुझे एक्चुअली जानना है कि क्या रीजन थी कि तुम पॉडकास्ट कह रहा हूँ 12वां खिलाड़ी में नहीं आई. इसलिए भी नहीं आई क्योंकि first of all I thought my role was not so because prominent. it was gonna be a debut acting whatever for me. तो मैं ये नहीं चाह रही थी कि मेरा गाना पीछे चल रहा हो, ये ऊपर इसके ऊपर बोल रहे हो. किसी को पता भी ना चला. गाना खत्म हो गया बट ये ऊपर बोलते रह गए. So और मुझे पहला शॉर्ट ही उन्होंने ये दिखाया था ना कि आपका गाना पीछे चल रहा है but like the talking मैंने like I did that was my baby that I मैंने उनको सुनाया था. And then उसके बाद ये था कि यार I used to have this condition called arthritis. Yeah, it's pretty much fixed now. Yeah, you have that too? No, I'm joking. I know somebody who. Okay. नानो को तो है. Yeah. क्या No, बात है just कि because तुम लोगों ने that's why- आपस में So I'm thinking of the नहीं, same नहीं, thing. हाँ. Our nano had it. Basically, bones में आपके दर्द तकलीफ वगैरह होती है ना. No, I'm joking. What's wrong with me? मैं किस तरह की बीमारी पे मजाक उड़ा रहा हूँ लोगों का. नहीं, I feel like it's in my family as well. That's why I said like me because I feel like. लेकिन अपनी condition बताओ जरा symptoms बताओ फिर मैं तुम्हें check कराता हूँ अपनी हड्डियाँ. देखो यार, so this is gonna be very exclusive by the way. I'm not NGL again over and Not over gonna lie. again. Yeah, over and over again. It's gonna be very exclusive because 4 years ago I was literally on a wheelchair for about 6 months and I was also doing Punjab tour at the same time. So मेरा एक पैर का size जो था वो 37 था, एक 38 हो गया था because it was so inflamed. My bones were majorly inflamed, like my knees, my knuckles, my joints, everything. Like अगर ग्लास साथ पड़ा हुआ है ना तो मैं उसको यूं करके भी नहीं उठा पाती थी. Like it was that it got to a point where I was just like I was taking methotrexate. I think this is a chemotherapy medication. I lost most of my hair and I was just gaining weight because I was taking 12 steroids every morning just to like be able to do things. You know what I mean? So it was quite major. And then I went to this doctor in New York. उन्होंने कुछ हमें injections हमें so royal.
हमें कुछ इंजेक्शंस लगाए उन्होंने, उसके बाद हमने रॉयल हो गए, उसके बाद एकदम ही उसके बाद हम अपने व्हील चेयर से उठे और हमने स्टेज को गया। एनीवेज सो उन्होंने मुझे एटलीस्ट व्हील चेयर से हटाया क्योंकि मेरे जो नीज थे ना दे वर रियली इन्फ्लेमेटेड। सो मैंने उन दिनों मेरा काफ़ी ट्रिगर हुआ था आर्थराइटिस, हाँ, जब हमें बारवा खिलाड़ी करना था तो मैंने ये मायरा से शेयर किया था। एंड देन मायरा वाज जस्ट she's the nice, I don't know why she's so nice. Myra is the nicest. I don't understand, like come on man, like show me something. Like show me something man, like show me something. Some days I want to like be like show me something. Like and she still be like no sweetheart. So she's Myra is so nice that she is I think dangerously nice. Yeah, I've never met इससे ज़्यादा sweet person कोई, मतलब इतना काम क्या हो गया यार। But I want to go to that medication. I want to join that medication center. Myra was the बारवा खिलाड़ी की मैंने तुम्हें बात बताई भी है ना। Myra was like, she was like a little baby on the stage. She was jumping around, telling us what to do. She was in her pajamas and like, बस हर वक्त active, extremely active, and very nice. She's very true, like very. Yeah. So I told her this story. I wrote her a huge message, and I was like, should I send it or should I not send it? But मैंने कर दिया, मैंने कहा oh, fine, whatever, because they all were just like, oh, Saad is getting mad at you, Nina is getting mad at you, और मुझे नहीं लगा कि मैं इन सबसे ये चीज़ शेयर कर पाऊँगी. I never felt the comfortability to actually share that, but with Myra, I thought maybe she's gonna understand, and she did, and she actually told me something really personal about her own family issues too, which she told me that, oh, my mom used to have that, and I understand how it goes. So that's why the whole problem was solved very subtly, and it was like we have no beef between each other. That is the reason why. So thanks to Myra for actually understanding my situation back then. And I did not want to just like tell everybody कि यार मुझे arthritis है, यार मुझे arthritis है, यार मुझे arthritis है, मैं नहीं कर पाई. That's why I didn't want to do it. I really wanted to do it, but yet again I didn't want to do it because मेरा गाना पीछे चल रहा था, and you guys were talking on it. So I was like, what? No. No, eventually the script, I think they didn't do that scene it like that. They didn't show it like that. They actually did like the whole song. Eventually. और वो proper एक moment था और उसके अंदर. Who was it? कौन था? Next कौन था? Hina Ashfaq. हिना अशफाक. तुमने 12वां खिलाड़ी देखी है? नहीं ना, मैंने भी नहीं देखी. गुड, साथ मिलके देखते हैं किसी दिन. हिना अशफाक. Yeah, for sure we should. रुको एक सेकंड, मैं तुम्हें बताता हूँ. But I was both with you and Daniel. Yeah. This girl. So I don't want to be that girl again. अच्छा ठीक है. Like I've seen her in ads and stuff. KFC के ad में देखा था. Yeah, KFC के ads. ठीक है. तो she was then picked, and yeah man, I mean it was a good project. It was alhamdulillah, like हमें तो मेरा तो पहला project था, मुझे तो बहुत मजा आया. It was my first acting project and I had a ball. I think I was like the person who was enjoying the most. I was the person who was sleeping the least and working the most. Really? Yeah. I couldn't sleep because I was so excited. जो मैंने trailers वगैरह देखे, teasers वगैरह देखे, they seem pretty awesome. Not gonna lie. People who have actually seen the entire show, I have only seen 4 episodes because I कहाँ पे available है? TapMat पे. Okay. People who have seen the entire show, they tell me that it's very different and it's very nice because obviously like in Pakistan तुम्हें सारे एक ही तरह के shows मिलते हैं. But like you wanna acting debut करना है तुमने? Yeah, I'm not gonna lie, like मुझे काफी पुराना ये तो 12वां खिलाड़ी was not the first offer that I had, but इससे पहले मुझे काफी movies की offer आ चुकी हैं, dramas की offer आ चुकी हैं. It's just that and lately I'm actually also thinking about another one, but that's I can't, no, I can't say that. That's gonna get me in trouble. Movie or drama? It's actually a web series for Netflix. Very nice. Yeah. Very nice. Yeah. Lekin it's just that I want to establish myself as a musician. Like I really want my original music to be out there in the world. What are you talking about? Establish yourself as a musician? Oh, no. Because, okay, fine. People would think that, okay, sure, they would be like, oh, okay, bazi ki hit hone wala hai, blank malang, oh, go studio, whatever. But where's my music in it? Like, this was something so that you my don't consider producer... okay. This is something that my producer asked me to sing. Composing, I think, music. Like your style.
Like yeah, your style. my compositions, you Your know what I mean? composition. Like I know I have that in me. क्या हुआ? तुम कहाँ घूम गए हो? नहीं मैं एक्चुअली चेक कर रहा था, मेरे यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रैच हो रहा था, मैंने कहा पता नहीं क्या कुछ उग रहा है नया. मुझे लगा तुम विजुलाइज कर रहे हो क्या? नहीं. So yeah, I really want my music to be out there first of all. Before Before I step acting. into something else. और वो भी ना चले, and then I'm like, oh, okay, I'm broke. I'm broke again. Let's go back to BPO. Let's go back to Lisa Jackson, bro. Let me tell you something. Okay, पाकिस्तान के सबसे गंदे हालात में जो लोग सबसे ज्यादा पैसा कमा रहे होंगे ना, वो सिंगर्स होंगे. अभी बता दो. ठीक है, when Ima says I'm gonna go broke, इसका मतलब खत्म हो चुकी है दुनिया. हालात बहुत खराब हो गए भाई. यार मैंने देखो, मुझे बचपन से शौक था शॉपिंग करने का बहुत ज़्यादा, बट अम्मी पैसे नहीं देती थी ना ज़्यादा शॉपिंग करने के, तो और अब्बू से मांगने नहीं देती थी. हाँ, अब्बू से मांगने नहीं देती थी. जब भी मैं अब्बू की तरफ पहुँचती ही थी तो उन्हें पता लग जाता था कि तुम क्या मांगने लगी हो. सो मैंने कहा ओके, screw it, I'm gonna just like do job myself. हाँ, और फिर the only I think एक हैबिट जो मुझे है वो I'm a little bit of a shopaholic. Stupid shopping. नहीं यार, एक होता है ना shopaholic होना, एक होता है problematic shopaholic. My wife tells me that I'm a stupid buyer. I'm a stupid buyer. You know why? Because I love shopping from China. ये AliExpress नहीं है जो इसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी है bro. यार anything you can imagine you can buy on AliExpress. Anything. Like I saw this one light that goes in your head. I don't know why. Why I would wanted you to want buy that in the first I place? bought it. Jadoo? I got like this one dog barking repellent. मेरा कुत्ता जब भौंकता है ना, मुझे अनोइंग लगता है. उसका एक रिपेलेंट है, एक कोई डिवाइस है जो कि एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे आवाज वापस थ्रो करती है कुत्ते की तरफ. तो वो डर के चुप कर जाते. सॉरी कुत्ता भाई, डर के चुप कर जाता है. हाँ लिटरली वो आगे से रिफ्लेक्ट करता है उसकी अपनी भौंकने वाली आवाज, और कुत्ता कहता है अब ये कौन सा कुत्ता है. तो जग्स क्यों भौंकता है फिर हम पे? You have two people barking. No, that's the thing. तुम्हें पता है ना, हमारे जो कान होते हैं वो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं. उससे लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी की आवाजें हमें नहीं आती. कुत्तों की फ्रीक्वेंसी ऑफ लिसनिंग इज मच हायर देन ह्यूमन बीइंग्स, इसलिए वो कुत्ते हैं और हम इंसान हैं. Okay. तो कुछ इंसान भी कुत्ते होते हैं. फिर उससे दिल की बातें बाहर निकाल दिया. Emma, no personal talk. दिल के भड़ास निकल रही है. Emma, this is यार पूछ लो, जल्दी पूछ लो यार. रियलिटी है यो. यार बात करो यार. रियलिटी है यो. क्या तुम लोगों को नहीं लगता? एक मिनट, क्या तुम लोगों को नहीं लगता कि कुछ इंसान भी कुत्ते होते हैं? यार होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है तुम किसको कुत्ता कह रही हो. मैं शायद जिस इंसान को तुम कुत्ता कह रही हो वो इंसान मुझे पसंद शॉट ले रही हूँ, ठीक है, कुत्तों का. जिसको लग जाए इंसानों का, उसमें से मुझे जो कुत्ता नजर आ रहा है उसमें कुछ कुत्ते नजर आ रहे हैं. कुछ कुत्ते नजर आ रहे हैं, उनकी बात कर रही हूँ. ठीक है, सही है. समझ आ गई. ओके गुड. कि कुछ इंसान कुत्ते होते हैं. तो तुम मुझे ये बताओ कि Do you agree कि कुछ इंसान कुत्ते होते हैं? बिल्कुल, कुछ इंसान बहुत कुत्ते होते हैं. तो हम खाली मर्दों की बात क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? नहीं मर्द तो बात ही नहीं हो रही. सिर्फ इंसान मर्द तो नहीं है. कुत्ते लड़कियां कुत्ते हो सकती हैं. कुत्ते हो सकती हैं. लड़कियां भी कुत्ते हो सकती हैं. कुत्ते नहीं हो सकती, लड़कियां कुत्तियां हो सकती हैं. लेकिन कुत्तियां बोलना इज अ लिटिल टू मच ना. कुत्ते तो अमर से बोलते हैं. ये किस तरह का हमारा कल्चर है यार कि सेम वर्ड का अगर फेमिनिन फॉर्म निकाल दो तो वो बहुत बड़ी गाली है. Like English के अंदर भी dog is fine but bitch is like a गाली. Why? It's literally a female dog. कुत्तिया is a female dog. मैं किसी इंसान की बात नहीं कर रहा. Okay, so do you wanna say it again? कुत्तिया. Just like kutte, you know. Yeah, I mean, like, I hope you're not like indirectly saying something to me. नहीं, तुम्हें क्यों कहूँगा मैं कुत्तिया? but I don't know, you know. यार बहुत comfortable हो गया. मैं हो जाओ थोड़ा. तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें गाली दे सकता हूँ? हाँ बिल्कुल 1000%. लगता तो ठीक है, लेकिन क्यों दूंगा मैं ऐसे लाइव पॉडकास्ट पे भाई शरीफा. अच्छा लाइव पॉडकास्ट में शायद ना, तो लेकिन दी भी है तुमने. नहीं. Of course. When? मेरे घर पे. But what did I say? You said something like, actually you said something regarding कुत्ता कुत्ती. To you? हाँ but नहीं, गुस्से में नहीं यार. अच्छा प्यार में भी नहीं, ठीक है ना. प्यार लाइक बातों के बातों में. यार मुझे हम
What were we doing in your house? We were just we were just roaming around in this huge empty house, ठीक है? Just not doing anything, and then all of a sudden we couldn't find Jenga. ठीक है ना, ये गेम जो होती है, ये कहते हैं ना Jenga. हाँ, and then फिर हमने बोतलों के साथ शुरू कर दी. बोतलों के साथ कैसे Jenga शुरू कर दी? मुझे कोई आइडिया नहीं है ये क्या बात कर रही है. एक सेकंड माइक पास लेकर आओ. Sorry, he knows exactly what I'm saying. Which bottles? अच्छा नहीं, बॉटल नहीं थी, कुछ और था. एक मिनट बात सुन. बॉटल के साथ आप जेंगा कैसे खेलोगे? हैं तो मैं यही कंफ्यूज था. मैंने कहा पता नहीं क्या बात करी. बोतलों के साथ जेंगा शुरू कर दी हम लोगों ने. बोतलों के साथ करें. वो 3 बोतलें इकट्ठी नहीं बैठेंगी. I actually want to invite you and Hania Amir on मैं the अभी show पता together थोड़ी देर पहले next ये time. सोच रही I think थी, that is going to be very interesting. उस दिन मैंने बोलना था मुझे कुछ इस तरह की चीजें याद है. मैंने कहना था कि nothing is impossible. And I think I messed it up over there, and you guys made fun of me. They kind of bullied me. All I can remember is that there was a point. It was, I think, उससे काफी like देर हो चुकी थी और हम लोग गेम्स वगैरह खेल रहे थे टेबल पे और हम लोग 5-6 लोग थे by the way. और there was a point when we were laughing so much. And it was my first time meeting all of Aima's friends. I knew Aima because I had met her one time before. Once at that birthday. हाँ. उसके बाद मैं अब किसकी कॉल आ रही है बे? ये लो अम्मी जान की. अच्छा तो उसके बाद मुझे ये याद है कि एक पॉइंट आया where we were laughing so much and so hard कि हम सारे रो रहे थे और बस बोली जा रहे थे और बस शुगर लगा रहे थे. और वो बेहतरीन हंसी होती है जिसमें आप एक चीज ऐड किए जाते हो और फिर आप हंसी जाते हो, फिर ऐड कोई चीज दूसरी ऐड कर देते हो और बस आप. तो ये है फनी भी है ये फनी भी है. भी का क्या मतलब? इतनी देर से हम लोग बहुत फन कर रहे हैं. का क्या मतलब होता है? फनी भी है. अच्छा तुम लगता है तुम फनी. एक मिनट let me handle this. Do you think you're funny? I just crack a joke right now. think a lot of people agree. Says who? A lot of people. Like a lot of people में कौन आता है? तुम्हारे अपनी अम्मी, तुम्हारे अपनी बीवी, तुम्हारी अपनी कजन, तुम्हारे अपने जो अपने ग्रुप में 2-3 लौंडे. अपने कुत्ते कहने लगी थी ना तुम. अपने कुत्ते कहने लगी थी. मेरे दोस्तों को कुत्ता अपने दोस्त यार इकट्ठे किए हुए. अरे तुमने क्या कहा? Say a joke? हाँ, tell me a joke. क्या मतलब है? Tell me a joke. मैं तुम्हें क्या लगता है मैं जोक्स लेके घूम रहा हूँ तो बेचने के लिए? जोक ले लो माइंड में कोई एक आता है. मैं अभी सुंदर को कहूंगी, सुंदर जो है वो भी क्रैक कर देगी. लेकिन मैं कहूंगी नहीं. वेरी स्मार्ट. मैं कहूंगा सुंदर सुनाओ कोई जोक. आयमा बाजी को आयमा कहेगी तो मैं सुना दूंगी. नहीं तो मुझे सुनाओ कोई जोक. नहीं मैं आयमा तुम तो हो ना, तो मैं तो पता नहीं कि हम फनी. You think you're funny? I can. It depends. Okay. It depends. What does it depend on? I am not somebody जो कि हर वक्त माइंड में जोक्स लेके फिरती रहती है. But like if somebody slip, I know this is very wrong. It's not. But I'm about to tell you, it's very very wrong. You like dark humor? बहुत हंसी आती है. Oh my god. You like dark humor? यार मैं बता रही हूँ, I have a dark humor ना, ठीक है. So if somebody like slip really badly. So एक दिन ऐसा हुआ, अभी मजाक रात पे ना, एक लड़की आई, उसने ना बहुत लंबी हील्स पहनी हुई थी. अब वो ना बहुत बुरी तरह स्लिप हुई. लाइक शी लिटरली लाइक हैड दैट कार्टून काइंड ऑफ अ थिंग ना, जिसमें वो यूं गोल उड़ के घूमी. हाँ, और फिर नीचे यूं करके लेट गई. I ran. I mean, obviously, I ran towards her, but I could not. Like, मैं अपनी हंसी नहीं कंट्रोल सकी, ठीक है ना. हाँ, ये होता है. मेरी एक फ्रेंड है माहीन, उसका भी ये हाल है कि वो उसको पता है कि बुरा है, उसको पता है कि गलत, लेकिन नहीं कंट्रोल हो रही तो नहीं हो रही. नहीं होता. वो शायद हेल्प भी करेगी, बट उसको हंसी आ रही तो वो हंसी. अभी हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ते then I'll be like, oh sorry, oh my god. And I'll be like, oh, this is funny. So होता है कुछ लोगों के इस तरह के पॉइंट्स. मेरा डार्क ह्यूमर पसंद है ना. तुम्हें एक मेरा कभी कभी वो वाला भी होता है, नॉक वाला भी होता है. यार तुम्हें एक रील दिखाता हूं, तुम्हें डार्क ह्यूमर पसंद है. I can't actually show this reel on camera. Okay. Oh my god. He's like bullying wala dark. Just dark humor.
काफी डार्क ह्यूमर। मेरे पास एक्चुअली कुछ डार्क ह्यूमर के जोक्स भी हैं, लेकिन यार वो कहना कैमरा पे अच्छा नहीं लगता। हाँ, कहना कैमरा पे अच्छा नहीं लगता। वो खाली आपका जो एक सिक्योर्ड एनवायरनमेंट होना, एक फैमिली टाइप सीन हो तो आप कोई जज नहीं करेगा तो फिर ठीक है। हाँ एग्जैक्टली, ये बहुत इशू है। तो नहीं, और अदरवाइज बहुत है। तो मैं सुनाओ ना कुछ जोक। नहीं ना, कोई नहीं जज करेगा। बहुत ही नहीं, कोई देखता तो है नहीं। कंट्रोवर्सीज तो बनी नहीं ना, बिल्कुल भी। मेरे पे कभी कोई कंट्रोवर्सी तो आयमा पे वैसे भी कोई नहीं बनी है। ओह माय गॉड, यू गाइस किडिंग मी? Oh my God. नेवर इन अ मिलियन। इन्होंने पू को पुकारा। Never. How do you deal with sometimes with this shit? Just life in general, because like sometimes like even it gets to me sometimes. कभी-कभी हम लोग भी मेरे behalf पे। क्या चीज? मेरे behalf पे। नहीं तुम्हारे behalf पे हम क्यों डील करेंगे पागल? नहीं, मुझे लगा शायद you have that heart, you sympathy. Yeah. Of course I do. Why do you think you're on the show? Yeah, of course I do. You're on the show because I wanted to show my support. देखो तुम्हारी बेगम जो है ना वो बेग है, तो मैं और वो वैसे ही रिश्तेदार हुए, तो मैं वैसे ही फील करना थी ना, बट है तो ना। अंकल, हेलो अंकल, अभी से अब वो जाफरी है। whatever, वो है आयशा जाफरी बेग, ठीक है ना? वो आयशा बेग, आयशा बेग जाफरी। जिस तरह किम कार्दाशियन ने भी तो अपना नाम रखा था ना, और वेस्ट भी लगाया, तो वो क्यों नहीं कर सकती? कर सकती है। क्या हो गया? तो मैं हुआ वा क्या है? नींद आ रही है वापस? बात भूल गई है, वो बात भूल गई है। इंसान। मैं कुछ और बात करने लगा था यार। वो सवाल पूछ रही कि वो क्यों नहीं कर सकती। मैं कहने लगा था कि यार sometimes even Sundar and I we get into some shit because of the podcast, we say something, comment आ जाता है उल्टा सीधा। हम लोग तो पागल हो जाते हैं, ये बेचारी रोने लग जाती है, ये नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है इसका। ये थोड़ी सी वीक है ना, ये थोड़ी सी वीक है, तो ये लाइक इसका नया है ना अभी सोशल मीडिया पे और पब्लिक आई में। But like somebody like yourself जो कि इतना ज़्यादा like you have to perform and you have to always be a certain persona और ये बन के रहना और you know like all of this, and when shit like this happens where you know your name is taken in a controversial way or you are in some sort of a controversy, कुछ भी हो जाए recently जो भी हुआ सही है, how do you then go out and perform knowing that thing being in the back of your head कि यार shit I'm dealing with something but I have to you know have that face and Actually, this is very, very, this is a difficult question, to be honest. Yeah. And I do go through major, let's just say, dark times. मुझे याद है कि मेरा एक स्कैंडल बहुत उस टाइम पे ट्रेंड कर रहा था, और मेरा अगले दिन कराची में इवेंट था, एक कॉन्सर्ट था, प्रॉपर कॉन्सर्ट, and I was just so scared. I was just like, bro, like I don't want to do this, but it was just हमने already उसका you know token payment and everything हमने already सब कुछ लिया हुआ था, so we could not back out as well. But then the best part was कि मैं इतनी डरी हुई थी कि वहाँ पे जब मैं लोगों के सामने गई हूँ तो वो they were actually, I felt like they were cheering me up. Like कराची के लोग आपको बड़ा cheer करते हैं, I'm not gonna lie. ये अगर I love Lahoris, ठीक है ना? I love you guys. तो हाँ, लाहौर की आवाम थोड़ा आपको तंग करती है कभी कभार। किस तरह कभी थोड़ा बहुत कर देते, कोई एक बोलता है, लेकिन पता है इसका बेस्ट तरीका क्या है? कि आप कहो 1 मिनट, क्या कह रहे थे आप? क्या कह रहे थे? सुनाइएगा। चुप। आप क्या कह रहे थे? आप क्या कह रहे थे? प्लीज बताइएगा क्या कह रहे थे। फिर उनकी वहाँ पे हो गए थे, oh sorry baji we love you that's what they said. Yeah, so it's like confronting them is the best way of I think that's my coping like मेरा जो mechanism है कि किस तरह मैंने कंट्रोल करना है या सब कुछ। और अब एक चीज़ जो मैंने बहुत ज़्यादा करना शुरू कर दी है, I'm so proud of myself for this. I do not open up my Instagram. I like a picture, I post it, and then I go MIA. I do not like look at the comments क्योंकि वो कभी अच्छे like अच्छे होंगे भी तो हम लोग बुरे comments पे ध्यान देंगे ना। Yeah. And I don't wanna like delete कितने delete करें आप? Like I don't wanna delete them. You can't control majority of the public. You can't just go through, and going through I think in Pakistan the thing with artists is लड़के थोड़े से लकी हैं इस तरह के लड़के जो है ना वो उनके ऊपर जजमेंट कम होती है लड़कियों पे ज्यादा होती हैं। और ये मुझे तब पता लगा जब मेरी शादी हुई है, जब मैंने आयशा के आयशा ने मुझे कुछ दिखाती है कभी कभी DMs कि ये देखो और वहाँ पे प्रॉपर लाइक बदुआएं और लड़कियों की तरफ से बदुआएं और लड़कों की तरफ से अजीब जजमेंटल
कमेंट्स और मैं पढ़ रहा होता हूँ और मैं कहता हूँ यार शिट यार, आई मीन लाइक मेरी वजह से इस बेचारी के ऊपर ये सारा आ रहा है. मैं तो ट्रेंड हूँ ना, मैं 7 साल से काम कर रहा हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. लेकिन अगर मैं उसकी पोजीशन में हूँ जो इंसान बिल्कुल अभी इस चीज़ में एंटर हुआ है, तो उसके दिमाग के ऊपर क्या असर पड़ रहा है ये एक्चुअली मुझे कुछ सालों बाद पता लगेगा कि अगर ये चीज़ें मैच्योर हो के इसको इतना अफेक्ट करती है मेंटली कि नहीं करती. बिकॉज आप ऑन द फेस ऑफ इट यू कैन जस्ट से कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं. लाइक आप थोड़े से क्रैक होना शुरू है. You start feeling like you need a therapist or something. You start feeling like, and I'm not gonna lie, I actually been to a therapist like when I was going through something really shitty back then. A few couple, I don't know, not couple, I wouldn't say couple, but like kuch time pe, 1 saal pehle. I actually went to a therapist because I was like, I can't take this anymore. Because I just cannot keep my phone away from me, and I have to check everything. I have to look at every comment, whatever they're saying, and I have to give explanation. I have to justify myself, which I never needed to, because people who were involved, they knew the truth. So I was just pissed at the fact that why aren't they saying anything? But anyways, we're not talking about that. But I did went through a very dark phase, and I, not only me but my entire family and my friends, like they actually showed up because I stopped replying to them, and they were like, अच्छा इससे वैसे ही डर लगता है, मैं let's just go and see her. तो ये सारी मेरे से मिलने आई हैं, and then I was just like, again, just under my sheets, just like bawling my eyes out, crying, because okay, it might be like a little easier for guys when they're being character assassinated. That's what I feel like. But when it happens to a girl living in such a society and a culture, हर कोई भी नीचे लिख देता है, is this Islamic Republic, So वो बहुत different होता है. And my brothers were getting weird messages. My fathers they were getting weird messages. अगर एक normal बंदी या बंदा अपने आप को मेरी जगह रख के देखता उस टाइम पे, तो उनके अगर बहन भाई को ये messages आ रहे होते, उन पे क्या गुजरती? यार पता क्या होता है, another thing is when you sign up for the industry now, you don't know all of these things. You don't. And I guess like if most people know the reality of being famous, and like it looks really good from one point of view, and it is. Yeah, it's really good from one point of view. You get all the nice things in life, and people like fame is that dopamine hit that you don't get with anything else. जब कोई आपके साथ आके, मुझे याद है when somebody took a selfie with me for the first time, I was like on the 7th sky, like I was like, wow, this is amazing, this feels great. हालांकि मैं टाकी लगा रहा था उस वक्त, I used to work at Popeyes, like burger joint है, तो लेकिन I know what it feels like. So obviously being famous has its own pros, लेकिन जो cons है ना, if people truly understand or just grasp the all the cons that come attached with being famous and being a girl and being a guy, either way I think point is के काफी लोग जो है ना वो कहेंगे यार actually you know what, we're good not famous. And I have met so many of my friends. I think most of my friends have a bubble in my एक छोटी सी ब्रेक लेंगे हम, दोबारा से अब होगा टक मुकाबला हो गया अच्छे होते हैं यार तुम सारी बात में नहीं, हम वापस आए ना, हम वापस आ गए ब्रेक के बाद. हाँ जी, welcome back to the show. हाँ जी, welcome back to the show, and we are with the one and only Miss Aima Beg. Aima, आप कुछ कह रही थी कि आपका जो फेम है वो आपका कातिल बन गया है. ओह अच्छी वर्ड तो मैंने यूज नहीं किया, बट आप हाफ वे सही हैं, ऐसा भी है. बट देन आई थिंक ये सब हम आई थिंक हमें किसी ने गन पॉइंट पे तो नहीं कहा था कि ये करो ये करो. we're going for this life ourselves, right? But you didn't know all about it. मुझे सिर्फ गाना, to be very honest, I swore on my mother's life. She's not Hayat anymore, but I still swear on her life because I love her so much. मैं सिर्फ गाना चाहती थी मुझे सिर्फ अपना म्यूज़िक जो है वो ग्लोबली I just want people to listen to what I have to say, and I just want them to relate to my music. If they're relating to my music, I think मैंने वो गोल अचीव कर लिया जो मैं चाहती थी कि हो जाए. And then I also want to perform like Dua Lipa, so yeah. I wish you all the best of luck, and I hope you get there. You're talking like as if we've gotten there.
I said you. I wish all the best of luck to you. In which भाई तू बोल ही कौन से इसमें इंग्लिश में ये सुनाई दिया है कि मैं वहाँ पे बैठा हूँ और मैं तुम्हें कह रहा हूँ आजा बेटा ऊपर आजा. बहुत अच्छा. I wish you all the best. दुनिया बहुत अच्छी लग रही है. I wish you all the best. I pray for you यार. मैं कह रहा हूँ कि मैं यार ये आजकल के सेलिब्रिटीज आप देख रहे हैं आप आजकल के सेलिब्रिटीज ऐसे करते हैं. ऐसे वो कह रही है ऐसे दुआते हैं. तो मैं दुआएं दे रहा हूँ, मैं दिल से दुआ दे रहा हूँ. मुझे हाथों की जरूरत नहीं है. जिन लोगों के हाथ नहीं होते क्या उनकी दुआएं कबूल नहीं होती? यार ना कर प्लीज. क्या कहने की कोशिश कर रही हो? किस्मतें तो उनकी भी होती हैं जिनके हाथ नहीं होते. और उनकी किस्मत ज्यादा अच्छी होती है. तुम्हें कैसे पता? Speaking of dark jokes, that's messed up. अच्छा, anyways, मैं कह रहा था मैं segue करना चाह रहा था, बल्कि segue नहीं, it's related. Please don't cancel me after this show. Listen, हम आगे बढ़ रहे हैं ना. Please मेरे concerts पे आते रहना. Please tickets खरीदते रहना. हाँ ठीक है. Listen, मैं कहने लगा था कि वरना मैं यहाँ पे बैठी हुई तीसरा होस्ट बन के बीच में. क्या तुम्हें लगता है ये बुरी जॉब है? कह रही वरना मैं यहाँ बैठी हूँ मेरे कॉन्सर्ट्स मतलब हम लोग के कॉन्सर्ट्स मतलब मैं तो तुम लोग की जॉब को जरा चैलेंज में वेला कंसीडर कर रही है. देखो तुम लोग कजन हो, जिसका तुम लोग कजन हो, तुम लोग मुझे गैंग अप नहीं कर, मेरे पे नहीं कर सकते, ठीक है ना. दिस इज माय एंटोराज, ठीक है ना. ठीक है, एक बंदी है, ये तुम्हारा आंटा है. राज मुझे नजर नहीं आ रहा है. एंटोराज का माने भाई, ठीक है. एंटोराज का माने ग्रुप. एंटोराज में बंदी एक है, हां, लेकिन हैवी है हम, ठीक है. तुम अपनी दोस्त को मोटा कह रही है. उसको कहती रहती हूँ. भाई तुम्हें मैं भी 70 किलो की थी. मैं 78 kgs की थी यार. इसने देखा हुआ है. यही तो वो बंदी जिसे देखा हुआ है. ब्रो 78 kgs तुम्हें पता ना कितने होते हैं? मैं 70 का हूँ. मैं 62 की हूँ अभी. ये 78 की थी. मैं 5'4" भी हूँ. मैं 5'4" भी हूँ. तुम 5'4" हो? खड़ी हो ना यार. ये वाकई 5'4" है और ये 78 की. तो तुम तो इतनी होगी फिर आयमा. मैं तस्वीरें नहीं खिंचवाती थी क्योंकि पूरी तस्वीर में नजर ही में आती थी. सही है, बैठ जाओ. अच्छा, मैं कहने लगा था कि यार डोंट यू थिंक द सेलिब्रिटीज बिफोर द सोशल मीडिया दे हैड इट इजी? यही तो मैं कह रही थी कि लाइक आतिफ असलम वाला यू नो ये वाला जल वाला एरा एंड ये जितने भी थे, ये सारे इन्होंने कितने मजे से सब कुछ कर दिया. इंडिया बिगाड़ दिया आराम से. इंडिया सपोर्ट भी कर रहा था. हमारे टाइम पे अब कंपटीशन बहुत है, बट एक अच्छी चीज है कि पीपल आर नाउ मोर लिबरल, दे आर मोर एक्सेप्टिंग. It's odd that you say that. I actually contradict. I actually don't agree. Don't you think like people are not liberal? People are not accepting. That's the biggest issue. I think this new generation, they're different. They are actually bringing a change, and they're actually very adamant. New generation, sure, but new generation aren't the masses. They're not the masses for sure. तो but तुम जब masses की बात करती हो या masses, क्योंकि चला तो आपका मुल्क masses ही रही है ना. When they're not acceptable, they are not looking for new ideas. They don't want to understand your point of view. But like every day there's a new baby come to this life, and it doesn't have to be an ignorant, you know what I mean. उसको अगर वो ऐसे माहौल में बड़ा हो रहा है जहाँ पे हमारी जनरेशन अब काफ़ी ठीक होती जा रही है. They're accepting new weird shit as well. I'm not gonna lie. They're literally accepting. अगर तुम hip hop की बात कर रही हो तो obviously that's like a revolution in Pakistan. Exactly, bro. They've accepted rap. यार, I know. लेकिन the thing is, मैं तुम्हें एक बात बताऊँ. The hip hop culture ना is such a niche. Like we don't even realize when we say these things, but such a niche. Those are like those Western people or people with a Western mindset. Yeah. They're very limited. हाँ, understandable कि उन लोगों को एक घर मिला है पाकिस्तानी हिप हॉप की चेहरे में, पाकिस्तानी हिप हॉप के तरीके में. लेकिन those are the minority. Yeah, I get that. Very small minority. जो masses है ना वो अभी भी थोड़ा सा यानी कि अभी भी उन लोगों को तुम उनको सुनाओगी तो वो. You know why I did Washmalle, this new track that I did, the Balochi song that I did, Washmalle. Why did I do that? Because masses, this is what masses wants. Yeah. और मैं अभी कॉन्सर्ट करने गई, उन वशमल्ले का नारे लगा रहे थे वो. मैंने कहा like I knew it. Nice. Some projects have their own fan base. Yeah, some नहीं. मेरे तो मतलब ज़्यादातर गाने जो folk हैं वो लोग, that's why they love it, because people love me in Multan. Oh, they're crazy, but I love them. People love me in Multan, they love me in Balochi, whatever, जिस भी एरिया में मैं जाती हूँ, because they think, oh, she speaks and she sings in our language, but
the honesty is that I don't know their language. I just know like bits and pieces of it. I'm not really like fluent in it. So now is the time to show them what I actually been working on. Let's go. Yeah. I'm tired. I don't. When is it coming out? Your album? After Eid. Your chapter? My first chapter coming out after Eid. What date? Eid. I'm not gonna reveal the date. Do you think I'm gonna reveal the date? Not that I'm Justin Bieber. I thought you were gonna I'm Taylor Swift. That I'm gonna reveal. हाँ? Remote चाहिए? Promote. बे remote क्यों चाहिए मुझे? ये क्या है? Remote चाहिए? ये क्या चीज़ है? Remote लेके आओ. अच्छा. नहीं यार. You know what? I truly wish you all the best of luck. I think that whatever you do, whatever projects you undertake, like you have such a good voice. And such a large vocal range that it's actually amazing. You're one of a kind as well in Pakistan. मेरे गाने सुने भी हैं? सारे गाने सुने थे मैंने. सारे. वशमल्ले सुनो. वशमल्ले. बस एक लाइन. ना मैं मल्ले. वशमल्ले. मुझे इसको देना पड़ेगा. मल्ले. वशमल्ले. I have to give you the credit because मेरे शायद YouTube पे नहीं Instagram पे बहुत दफा मैंने लगाया था. Instagram पे कौन सुनता है? हम तो YouTube पे ही सुनते हैं. आप विजिट की होगी स्टोरी हमारा वहाँ दोबारा चल रहा होगा वशमल्ले. ये भी लाइक याद हो गया मुझे. नहीं. Yeah, I've listened to all of your songs. I don't think there's a song that I have not listened to. I think Coke Studio के तो सारी सुने मैं. ठीक है. उसके अलावा भी जो हैं वो भी सुने मैं. तुम तो आप कुछ बोलना चाहेंगे? क्यों नहीं? आपको बोलना चाहिए. तुमने भी नोट किया ये? तुमने भी नोट किया ना? ये सारे गेस्ट नोट करते हैं कि ये सारी बात नहीं करती. नहीं मैं करती हूँ बात. मैं कब नहीं करती बात. और ये हर बार यही कहती है. मेरा एक एक्स होता था. उसको सबसे ज्यादा लगता था कि ये बहुत फनी है. हमें तो पता ही नहीं आपका यार. कैमरा उसकी तरफ करना. ये तो देखना और तुम मेरी तरफ देखना और तुम मेरी तरफ देखना. उससे कैमरा मेरी तरफ इसलिए कर रहा है. हर जगह से पकड़ा 3 डिफरेंट एंगल से. नहीं यार दिस इज. तो उसको ना अब बहुत फनी लगती थी. अच्छा थैंक यू. तो मैंने बैठ के स्टॉक किया. रियलिटी तो ये है कि मैंने बैठ के स्टॉक किया कितनी फनी है. अच्छा. And then I texted you. So there was a time you were jealous from Sundas. Jealous? यानी कि स्टॉक तो उन लोगों को I was intrigued by her. I was like, okay. Envious. In a way, after watching her, I was like, yes, for sure. तुमने याद है मुझे एक स्क्रीनशॉट फॉरवर्ड किया था. लड़के फ्लैट हो रहे थे. लड़कियों के लड़के फ्लैट हो रहे थे ब्रो. I was literally just मैं रिकॉर्डिंग छोड़ के मैं स्टॉक कर रही थी इस बंदी को. No way. Yes. फिर तुम्हें क्या पता लगा? कि बंदी फनी तो है. लाइक आई गेट. उसके बाद तुमने लड़की को छोड़ दिया. लड़के को छोड़ दिया. तुमने इस बात में लड़के को छोड़ा है? इस सुंदर के पीछे मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी. इसके पीछे मैं उसको क्यों छोड़ूंगी भाई? तू रह फनी. मुझे जेन्युइनली लगा ब्रो सुंदर caused Ima Baig's breakup. Like न्यू टाइटल. ठीक है मैं रेडी हूं हेडलाइन देखने के लिए. नेक्स्ट डे आई एम रेडी टू. बट नहीं मैंने जब इसकी वीडियोस वाकई देखी ना तो ये ब्रो सही like she knows how to like yeah. यार ये ना actually अभी सुंदर की ट्रेनिंग चल रही है. यानी literally this is bring your child to your workplace. ये सुंदर को मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ एक्चुअली कि सुंदर मेरे साथ काफी टाइम से साथ है यार. सुंदर बट ये ट्रेन नहीं हो रही है. स्लो बच्चा है ये. बच्चा स्लो है मेरा. साबुन स्लो है. 120 एपिसोड्स तक कर लिए मैं इस पॉडकास्ट. आई थिंक क्लोज pretty awesome. हम लोग ने काफी एपिसोड्स कर ली में. बट द इशू विद सुंदर जिस तरह मेरे साथ है ना उस तरह जब कोई गेस्ट आता है सुंदर वैसे ही रहती. सुंदर इंट्रोवर्ट है. मसला ही है सुंदर का. तो लेकिन आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट के. नहीं लेकिन मैं वो कितने लोगों के दांत देखती होगी दिन में. तो जो लोग दांत देखते हैं वो क्या वो नहीं देख सकते. वो देख तो सकते हैं पर वो ये भी जानते हैं कि इनके मुंह के अंदर क्या चल रहा है. Damn, that's deep. That's what she said. No. I was waiting for that. Look, I've been watching way too much Office. This is just Michael Scott talking. I don't even know what that means. Yeah, right. You don't know what that means. You don't know what that's what she said means? I do not. ठीक है बस कर. मतलब यार तुम तो बातें पकड़ लेते यार. You know what? She gang up. बता. What does that mean? बता. क्या बताओ. तू बताएगा भाई. That's what she said means basically. That's what we said collectively.
ऑडियंस के लिए मैं बता रहा हूँ, जिन लोगों को नहीं पता कि लड़के ये बोलते हैं कि that's what she said, जब लड़कियां भी बोलती हैं insinuate कि यार उस लड़की ने ये बोला था, तो जब आप कहते हो कि यार that's, लेकिन उसने ये क्यों बोला था ये नहीं बताओगे? इतना डीप नहीं हो रहा मैं इतना डेप्थ में नहीं जा रहा भाई का। नहीं मुझे नहीं पता ना, हम लोग जेन्युइनली नहीं पता, नहीं पता अल्लाह की कसम मुझे नहीं पता, ये अल्लाह की कसम खाने पे आ गए, अल्लाह की कसम मैंने कहा था, मैंने किसी को नहीं कहा। खैर यार, एनीवेज आपने ये भी मतलब बता दिया रे, व्हाट एल्स योर ऑडियंस वांट? नथिंग यार, आई मीन 2 घंटे हो गए आयमा, ओह माय गॉड, इतने तो मैंने अपनी से कभी भी बात ऑफिशियली दिस इज द लॉन्गेस्ट पॉडकास्ट वी हैव एवर रिकॉर्डेड। नहीं ये नहीं हर किसी को बोलते होगा, हम लोग हर दफा कोई ना कोई 1-1 मिनट का रिकॉर्ड ऊपर जाता है, लेकिन हमारा 2 घंटे, और मैंने तब से अपना सुसु रोका हुआ है, ये देखो तुम लोग सबसे ज्यादा इस चीज को क्रेडिट दो, 2 घंटे में सुसु करने नहीं गई, ठीक है? माय ब्लैडर हैज बीन स्क्रीमिंग, सेम, पहले मैं जाऊंगा, ठीक है? नहीं ब्रो, मैं पहले जा रही हूँ, ठीक है? ये मुझे वॉशरूम लग रहा है, ठीक है ना? इस पे मेरी नजर है, अगर इस पूरे रूम में मेरी नजर किसी पे थी ना, तो ये वो दरवाजा है, ठीक है ना? सही है। नहीं यार, it was awesome speaking to you. We hope, really awesome. It was we really hope that you come back again. Okay. After you release your song and come and tell us your experience कि लोगों ने enjoy किया कि नहीं किया। तो तुम लोग मुझे बताना ना, तुम लोगों ने enjoy किया कि नहीं किया। हाँ हम बताएंगे ना, तो तुम आओगी तो बताएंगे ना। मैं आ जाऊंगी, सुंदर होगी। सुंदर होगी। सुंदर अगली बार सुंदर बातें भी ज्यादा करेगी। सुंदर तुम्हारा क्लिनिक कहाँ है? यार मेरा क्लिनिक इधर ही पास ही है, बेदिया। मैं तुम्हारे पास दांत दिखाने आ सकती हूँ, तुम जज तो नहीं करोगे? बिल्कुल जज तो नहीं करोगे, कसम खाओ। ऐसे हाथ रख के। अच्छा, बेहतरीन, माइंड ब्लोइंग। क्या दांत है, वाह वाह वाह। तुमने क्यों देखा बीच में? ये तो हम ये किए बीच में क्यों देख रहा था? किया था ना बच्चों, दोनों साइड से करना था। मैं देख रहा था कि डॉक्टर साहब, हमने दोनों साइड से नहीं किया था। बता दूं कि क्या सीन है क्या सीन नहीं है। चलो खैर यार, हम पॉडकास्ट एंड कर रहे हैं, ये लोग दांत दिखाने लगे हैं एक दूसरे को, तो हम लोग पॉडकास्ट एंड करते हैं। आयमा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन टू द शो। Thank you so much for amazing having you over. पता नहीं हम लोग ने किस बारे में बात की है। I don't even know, like oh my god, I don't even know। मेरा इसके बाद क्या इमेज होने और क्या इमेज होने वाला है, ठीक है? दूसरी साइड भी नहीं पता कि क्या होने वाला है। नहीं, you were just the best thing is कि honesty. The best thing is you were very honest about everything, and that's good. Yeah, and I just want to say one last thing. Yeah. Okay, you guys be like, oh my god, No. she's not gonna shut up. Sundar's like, नहीं मैं आपको बताती हूँ क्या, प्रॉमिस बाय गॉड, मेरी ना 1 घंटे के बाद गर्दन थक जाती है, तो मैं अपने माइक पे ना रेस्ट करती हूँ ऐसे। तो तुम्हारे पास उधर भी तो जगह है ना? इधर देखो, इधर उधर कोई बैठा नहीं है ना आयमा, ये देखो ना, इधर तुम्हारा इधर तो ये बनेगा ना आयमा, इधर कोई बैठा नहीं है ना। तुम्हारा तुम सीधी हो जाओ ना, तुम यूं करके क्यों नहीं बैठ जाती? ये देखो, ये अब सीधी हो जाएगी गर्दन। ये तो मैंने सोचा नहीं, इतने एपिसोड्स हो गए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। पर लाइक मैंने जो अपना ये बिगिनिंग का जो जर्नी था, वो जो जर्नी था, पठान बन गया मैं पहले। जो तुम्हारे बिगिनिंग का जर्नी था, मैं पठान था, ठीक है ना? नहीं, जो आपके बिगिनिंग का मेरा जर्नी था, वो ये था, that was just to tell people, ये जो नई जनरेशन आ रही है, कि अगर I mean, if you guys are working, earning on your own, even if you're 16, 17, or नहीं बताना किसी को, and you feel ashamed and all of that, then don't feel ashamed. This is the actual achievement you achieved. Out of all of my achievement, I think मैं जब भी वो टाइम सोचती हूँ ना, तो मुझे वो टाइम सबसे मुश्किल लगता है। मुझे लगता है वो टाइम सबसे प्यारा भी था, क्योंकि मैं सब कुछ like I was just hustling. Back then I was hustling. तो वो hustling वाला टाइम जो है, I think everybody should own it, and I think nowadays kids are like doing so good, to be very honest. घर पे बैठे बैठे कमा रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, तो I think थिंकिंग खत्म हो गई बस अब, यही तक यही कहना। I think थिंकिंग खत्म हो गई, यही खत्म करते हैं ये, क्योंकि सुसु सब दिमाग तक पहुंच गया, ठीक है? दिमाग तक पहुंच चुका मैसेज देके सुसु दिमाग तक पहुंच गया। हाँ, दिमाग No, Aima, thank you so much for coming on to the show, and honestly, like, thank you for sharing your life details with us. It was truly inspiring, and especially your beginning. अच्छा ना, बस समझ आ गई भाई, समझ आ गई। Ladies and gentlemen, thank you so much for joining us on today's show. अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, तो don't forget to subscribe, and we will as always catch you in the next one. Thank you so much. Love you. Tata. Bye. Allah Hafiz. मतलब मेरा अल्लाह हाफिज नहीं लेना है, नहीं करते हैं। अल्लाह हाफिज। Okay. अल्लाह हाफिज। Bye. बाय।